to the CBI, EPFO invested 2,500 crore in Reliance Capital's secured NSDs during 2013 to 14. Now, the agency alleges fraudulent fund diversion led to a default in redemption, causing a wrongful loss of rupees 1,007.55 crore, along with 808.67 crore in interest liability. So we see, viewers, it's big trouble coming in for Anil Ambani. We will go straight across to my colleague who's joining us. Let's go straight across to my colleague Rishita, who's joining us live from a Republic newsroom. Rishita, I'm coming across to you, and then we'll go across to Atul as well. Now, this is a serious fraud which has taken place here, and the CBI is investigating. In fact, the investigation is underway to trace the end use of funds and identify the role of all accused. Right, absolutely, Shivangi. Now, this is a rupees 18,016 crore rupee fraud that has been done. So the CBI has registered an FIR not just on the chairman Anil Ambani, but also other unknown public servants and others who have been involved in this EPFO investment fraud. This involves rupees 18,016.22 crores. According to the CBI, EPFO invested rupees 2,500 crores in Reliance Capital secured NCDs during 2013 and 14, which were to be matured, but the agency alleges that the fraudulent fund division has caused them a wrongful loss of rupees 1,007.55 crores. Now, it also needs to be noted that the statement has said that it has earlier registered 7 FIRs against Reliance Communications Limited, Reliance Home Finance Limited, Reliance Commercial Finance Limited, and Reliance Telecom Limited. This has been the update so far. We have been tracking this news very closely, and we'll be back with the updates shortly. Back to you for now. That's right. I also want to go across to Atul, who's joining us live from New Delhi. Atul, I'm coming across to you right now, and we understand that the accused persons indulged in fraudulent transactions, diversion of funds, resulting in the default in redemptions of the NSDs by Reliance Capital Limited. Now, overall, it looks like a very complicated case, but if you could just tell our viewers and really break down what exactly is this fraud all about. Well, the actual wrongful loss is about rupees 1,000 crore, whereas the 800 crore is the interest of this. So total is 1,800 crore rupees loss, which the consortium of banks suffered. The EPFO lodged a complaint with the Federal Probe Agency, which is the CBI, and the CBI initiated a PE. Based on the PE, the CBI lodged an FIR against Anil Ambani, unknown servants, and the firm. And now, in coming days, the CBI will send them someone to join the investigation. Apart from this, the CBI, in earlier connected cases, they have filed 4 charge sheets against Ambani, and this is the fresh case which was lodged yesterday. Yes. Well, thank you for joining us with all those details. I want to thank both my colleagues, Atul and Rishita, for getting us the big update coming in. Anil Ambani is in big trouble. Now, we will also move ahead, viewers, to some of the other stories we're tracking. A day after the terror attack by Lashkar Front that killed 2 civilians in Kulgaon, 2 controversial statements have been made by the National Conference. Minister Javed Rana is now calling for talks with Pakistan a day after the terror attack. Meanwhile, Farooq Abdullah links a terror attack to statehood demand. So once again, we see controversial remarks are being made. I repeat, now this is coming just one day after the dastardly terror attack by Lashkar Front that killed 2 civilians in Kulgaon. And after that, viewers, we are coming to know that the NC is making a couple of statements. They're calling for talks with Pakistan. This is something that some leaders of the NC have been repeating again and again. And Farooq Abdullah linking the terror attack to this demand for statehood. जो है क्या आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग जो है वो स्टेटहुड की डिमांड से लिंक कर रही है, क्योंकि आज सुबह रिपब्लिक से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहा? कुछ भी हो सकता है। मैं कहूंगा कि यहाँ क्योंकि देश की लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने इस बात का क्रेडिट भी लेना चाहा कि हमने 370 को तोड़ के रियासत को डिग्रेड करके हालात ठीक किए हैं, और हालात ठीक नहीं हैं। ये किलिंग हो रही है, इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है। तो ये कहीं भी ये चीज जा सकती है। मैंने पहले भी कहा, मैं डिमांड करता रहा हूं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन यहां बैठाया जाए और इन सब चीजों को
देखा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। पाकिस्तानी आतंकियों का नाम भी आ रहा है इसमें, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान पे तो कोई एतबार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान तो हमेशा इंट्रिग करता रहा है 47 से लेकर आज तक, और पाकिस्तान तो लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करेगा? पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैसे कंट्रोल हो? 56 इंच का सीना तो आपके पास है, कंट्रोल कैसे करेंगे? 56 इंच का सीना इस्तेमाल करें ना सर, टॉक्स होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, इसको टैक्स होनी चाहिए। टैक्स में अगर आप 56 इंच का सीना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बातचीत करें। ये अफसोस है, इसे हमारा ये भी पता नहीं कौन मारने वाले हैं, ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। सर, अटैक हुआ 2 कुलगाम में जो है 9 लोकल्स मारे गए हैं। सुरक्षा अमरनाथ यात्रा के दौरान दोनों जो है बाहरी थे। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, ये उग्रवाद की जो रोज उग्रवाद से जो किलिंग हो रही है, अब इस पे बयान दे दे के हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग थक गए हैं। अब हमारी ये हालत हो गई है कि हमारा दिल ही नहीं करता हम इस पे बयान दें। जब एक साइड सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि उग्रवाद खत्म हो गया, और आप लोग ही दिखाते हैं कि आज इस इलाके में 2 मिलिटेंट रह गए, उसमें 3 मिलिटेंट रह गए, उसमें 4, और खुद कहीं पीछे कुलगाम में तो कहते थे सफाया हो गया, मिलिटेंट है ही नहीं है वहां पे, तो फिर ये 2 लोग कैसे मारे गए? चंद रोज पहले एक हमारा सिपाही जो है वो अनंतनाग में शहीद हो गया, कैसे मारा गया? ये कौन लोग हैं? कौन लोग ये किलिंग कर रहे हैं? उग्रवादी हैं या कौन से लोग हैं? जब भी स्टेट का दर्जे की बात शुरू होती है कि स्टेट का दर्जा बहाल करो, कोई ना कोई किलिंग हो जाती है। हम तो अब इसको इस नजर से देखना शुरू हो गए हैं। और मैं होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जम्मू कश्मीर में एक हाई लेवल इंक्वायरी करिए इन मुद्दों पे कि ये किलिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। एक साइड जब सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि हालात ठीक हैं, और जब दूसरी साइड, अब तो यहां जम्मू कश्मीर में यूटी है, अब तो स्टेट है नहीं, अब तो सीधी सेंटर के हवाले सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो फिर किलिंग कैसे? आगे तो कहते थे ये जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन कराते हैं, तो अब कैसे हो रहा है? ये उग्रवाद कहां से आ रहा है? इसलिए मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि होम मिनिस्टर साहब से, कि जब 22 में हुआ, पुलवामा में हुआ, उस समय ही एक हाई लेवल इंक्वायरी जो करनी चाहिए थी और सामने सच आना चाहिए। आपने कहा कि जैसे स्टेट की बात आती है तब किलिंग शुरू हो जाती है, आपको क्या शक लगता है कौन हो सकता है? मैंने यही तो कह रहा हूं, क्योंकि हम शक करना शुरू हो गए। अभी हम जंतर मंतर पे धरना दे के आए हैं चंद रोज पहले, और इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। पौने 2 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ। हम लोग जंतर मंतर में गए, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो अलायंस पार्टनर हमारे हैं या इंडिपेंडेंट जो ऑनरेबल एमएलए हैं, वो लोग, हम लोग गए वहां, धरना दिया। जब धरना दे के वापस आते हैं, अनंतनाग की किलिंग हो जाती है, यहां आपकी कुलगाम में रात को किलिंग हो गई। हमें दुख है कि ये नजायज लोग मारे जा रहे हैं। उन घरों को पूछिए जिन घरों में ये लोग शहीद हो रहे हैं, जिन लोगों के घरों में ये डेड बॉडियां जा रही हैं, आम लोगों की। ये छोटी बात नहीं। आप अनंतनाग जब वो पुलिस वाला शहीद हुआ, उसके परिवार कैसे बिलख बिलख रो रहा था। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के लोग रोएंगे? आखिर कब तक जम्मू कश्मीर में आखिरी मिलिटेंट मरेगा? अब आपने तजुर्बा भी कर लिया, आपने स्टेट को तोड़ के यूटी भी कर दिया, स्टेट को तोड़ के जो स्पेशल स्टेटस था 370 35 भी तोड़ दिया। 5 अगस्त 2019, कितने साल हो गए आपके? आज 6 साल हो गए इसको तोड़े हुए, अभी भी अगर किलिंग हो रही है तो एक सवाल खड़ा होता है। आप जी सर मीटिंग ले रहे हैं 11 बजे सिक्योरिटी रिव्यू। यार रोज मीटिंगें तो रोज सुनते हैं, मीटिंगों से बात नहीं। आखिर ये कौन है, कैसे हो रहा है, किसके लेवल पे लैप्स हो रहा है? एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक फाइनल आप स्ट्राइक करिए उन लोगों पे, उन ऑफिसरों पे जिनकी क़यादत में, जिनकी लीडरशिप में ये हो रहा है। एलजी साहब को फ्रंट फुट पे आना होगा। अब रोज हम कितना इसको अफसोस करें, रोज कितना कभी फूल चढ़ाएं। हम भी थक गए हैं कि हम फूल चढ़ा के इन लाशों के ऊपर, बेचारे इन डेड बॉडियों के ऊपर। तो अब जम्मू कश्मीर के लोग थक चुके हैं। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? मैं कोई एजेंसी का आदमी तो हूं नहीं, ये तो आप मीडिया के लोग और एजेंसियों को जाके पूछिए, और जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं उनको पूछिए कौन हो सकता है। And viewers, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha chaired a high-level security review meeting today. In fact, the Lieutenant Governor directed all the Deputy Commissioners and the SSPs to conduct a comprehensive review of the standard operating procedures established to protect labourers from outside Jammu Kashmir. In fact, he also directed that the employers must ensure all workers from other states and UTs of the country are provided insurance and that their details are registered with local police and district authorities.
Let's go straight across to my colleague Gursimran. Gursimran, in that security review meeting, we saw that the LG has conducted a top-to-bottom audit of the entire security apparatus. He has given some directions as well to make sure that the non-locals and the laborers who are working in Jammu and Kashmir remain safe. Yes, Shivangi, you have rightly mentioned that LG Manoj Sinha has held a security review meeting in which a threadbare discussion has taken place on the security apparatus, as well as directions have been passed to the deputy commissioners to ensure that the standard operating procedures for the security of these migrant workers in Jammu and Kashmir is followed thoroughly, and also the owners of the brick kilns or any other establishment that is having the migrant workers as their employees, they should also bring in all security measures and also insurance for their employees. But this meeting could not be seen in a standalone environment because there is a larger threat. I'm repeating that the agencies have warned of. Agencies have said that this is just a start of the series of terror attacks that have been planned by Lashkar-e-Toiba, by its commander Sajid Jatt sitting across the border. Same Sajid Jatt who is instrumental and one of the key conspirators of Pahalgam terror attack. He is basically presently based in Lahore and is operating from there. He has been there in Kulgam for 2 years, 2005 to 2007. So that threat is in the minds of the security forces, and the regular inputs have actually forced the establishment to go to these kind of directives and to hold an emergency security assessment meeting, because this is the first killing of the civilians, non-locals post Operation Sindoor, which means that the Pakistani establishment and the Pakistani terror groups have given a go-ahead to its terrorists in Jammu and Kashmir to go and target the civilians, target the security forces, which is a real concern for the establishment of Jammu and Kashmir Lieutenant Governor as well as the law enforcing agencies. And now we have seen that the established SOPs are being strengthened and also the security has been beefed up. But the major threat continues to be Latif, one of the attackers who is involved in this attack, also suspected to be in the attack that has been carried out in Anantnag. This 21-year-old terrorist is one of those who has escaped from the Shopian encounter on July 8 when his associate Zakir Ganai was killed. So now the security forces' prime focus is on Latif Bhatt so that he can be neutralized at an earliest, and the directions have been passed by the LG Manoj Sinha. That's right. Well, thank you for getting us all those details. Good, sir. We'll be coming back to you for more. Let's move ahead, viewers. Now, the prices of commercial LPGs finally sees a reduction, thus giving the traders a sense of relief. The price reduction comes into effect in major cities like Delhi and Kolkata, where the price of the cylinder has reduced by more than rupees 200. Take a look. Central government on Saturday announced a reduction in the prices of commercial LPG cylinders, providing a relief to the traders. Metro cities like Delhi and Kolkata saw an immediate effect, with prices reducing by more than rupees 200. The price of the 19 kg commercial cylinder in Kolkata is now at rupees 2,872.50, while Delhi sees a reduction with rupees 202 cut from the actual price. This comes even as the West Asia war continues to impact global energy supplies amid disruption at the Strait of Hormuz. The war has impacted the daily life of workers and households who were dependent on LPG for their daily survival. Getting you some big breaking news coming in, viewers. And now, one more medal for India. Boxer Preeti has won gold. Preeti Pawar defeats Scarlett Savannah Delgado of Canada in the final of the women's 54-kilogram boxing event on Saturday. To win a gold medal for India at the ongoing Commonwealth Games 2026. So big news coming in for our viewers, and we see that one more gold for our country. We see that already we have a great medal tally of 23. Now it has gone up by one more medal. So back-to-back updates coming in here, viewers, on Republic TV, where we see that Preeti Pawar has won gold. Her opponent was Scarlett Delgado. And once again, India winning one more medal, continuing the great performance in the Commonwealth Games. So
one more reason for every Indian to be proud. Just right now, as we speak, viewers, we have seen that boxer Preeti Pawar winning a gold for India at the Commonwealth Games in 2026. It's day 9 of the 2026 Commonwealth Games. We can see that it's a medal-heavy affair for India. And we have seen it's a stunning day. Day 8 was a stunning day where India won 6 medals when Neeraj Chopra, Yashveer Singh in javelin, Tejas Shankar in decathlon, Asmita Dey, Harsh Singh and Yamini Maurya in judo. And now we are coming to know that one more medal for India on day 9 of the Commonwealth Games. It's a big win for India, where we see that India is performing extremely well. Our sportsmen and women winning medal after medal, especially after day 8, which was yesterday, and we saw 6 medals. India won 6 medals in one day, that was yesterday, and today another gold medal for India at the Commonwealth Games 2026. Record, I repeat, record number of medals are being won. I want to go close to my colleague Rakshita, who's joining us right now. Rakshita, it was a memorable day yesterday when India won back-to-back medals, and today as well a gold for India. Absolutely. In fact, India had an impressive 23 medal haul yesterday itself. 5 gold, 12 silver and 6. And now another gold has been added with Preeti Pawar. She's a Naib Subedar in the Indian Army. And she has defeated a strong opponent. And she has clinched gold for India. So India's golden run continues. In fact, last night we also saw how India had a double medal in javelin. Also silver and bronze in India's name, Neeraj Chopra and Yashveer clinching it for India. So yes, medals galore. And as far as boxers are concerned, India has been doing exceptionally well in boxing over the years. And this time around, we have more and more boxers, at least 10 of them in the finals. And this was one such example of how well we are doing and how our Indian boxers are making strides. So yes, Preeti Pawar has done it in the final. She has now clinched the gold medal here. So it takes the medal tally to another gold, to 6 golds now that we have now we have gathered in our kitty. And of course, it's going to be one exciting Saturday today also, because there are a lot of Indians in the reckoning for the podium finish as well. That's right. Rakshita, stay on with us. India is currently placed 10th in the overall medal standings the last time we checked. So last time was 23 medals. Now I think we have 24 medals in total, and not a bad spot for India this time around. Absolutely. You have to also not forget Asmita Dey, who has clinched the maiden gold medal in judo. A very young athlete, very young athlete who has made India proud. In CWG, we've seen that India has been only improving the tally with every edition of the Commonwealth Games. And this time around, once again, India is in the medal spot for more such finals in boxing also. So yes, India has been making strides in even those sports where India were not even heard of making the cut. So yes, this time in judo, we saw what happened after javelin. In Olympics, once Neeraj Chopra clinched that gold medal, it was the first in independent India that India had a medal in athletics, and that too a gold medal. And after that, we saw that there were so many of javelin throwers who were following suit, who were following Neeraj Chopra, that brought in a revolution as far as athletics are concerned. And we see more and more medals in athletics, apart from sports like boxing or wrestling or weightlifting. Mirabai Chanu has been India's most shining weightlifter. So we have icons who are being supplemented. We have more and more icons now. We don't have just one name. That's the best part. We have stars galore. We have entire galaxy of sports stars now who are right now shining very bright in Glasgow. That's right. Well, thank you for joining us with all those details. Rakshita, my colleague, getting us the good news. One more medal for India, taking the gold tally to 4 now. Silver 10, bronze 4. Much for coming up, viewers.
Coming right up, we'll talk about what we'll expect next week. FCRA bill to be tabled in Lok Sabha next week. Amit Shah to lead the debate. Stay tuned. चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। QSMTHE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. R Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने मात्र एक कोर्ट बना। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. जेनजी के भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic.
Very good evening. We are live and we are breaking this Saturday. I'm Shivangi Shukla getting you the latest coming in. Good news for all our viewers. India has won one more gold at the Commonwealth Games. We'll tell you all about it, but the headlines first. Let's get started. Headlines brought to you by Canara Bank. Together we can. Two laborers killed in terror attack in Kulgaon. Massive search operations underway to neutralize terrorists. Pahalgam rerun in Kulgaon. Hindus targeted by terrorists in dastardly terror attack. Mastermind behind Kulgaon terror attack identified as Lashkar Sergeant Jat, the same terrorist behind the cowardly Pahalgam attack of 2025. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। PM says punishing young people serves no purpose, appeals for forgiveness, reconciliation and a constructive path forward. Ruchika Singh abused PM Modi during CJP protest at Jantar Mantar, now apologizes to PM Modi. Madhya Pradesh CM Mohan Yadav warns against religious conversion and says those involved in religious conversions in tribal areas to be jailed. FCRA to be tabled in Lok Sabha next week. The bill will be tabled. Amit Shah to lead the debate. After Ashmita Day and Harsh Singh, Preeti Pawar backs gold in Commonwealth Games. Ashmita Day makes history at Commonwealth Games as 23-year-old from Tripura becomes the first Indian to win medal in judo. Neeraj Chopra wins silver. Yash Veer Singh backs bronze at Commonwealth Games in javelin throw in Glasgow. India's total tally is now 24. So viewers, good news coming in. Boxer Preeti wins gold. Preeti Pawar defeated Scarlett Savannah Delgado of Canada in the final of the women's 54-kilogram boxing event to win a gold medal for India at the ongoing Commonwealth Games 2026. It's a huge update coming in, viewers. Preeti Pawar started India's medal counter a short while ago at Glasgow Commonwealth Games. And she has won gold in the Commonwealth Games. She's defeated Scarlett Savannah Delgado of Canada. It's a blockbuster day. And look at the medal tally. We have got one more medal. Now the gold tally is 7, silver at 12, bronze at 6. A short while back, we have got to know that there's one more. Another gold for India. Jasmine has won a gold in women's 57-kilogram boxing category. That means the total number of golds is now 7. Back-to-back updates coming in here, viewers. 2 back-to-back golds, one shortly by India. Stunning in a stellar performance by India on day 9 of the Commonwealth Games. 24-year-old Jasmine defeated Michaela Walsh of Ireland in a split decision on Saturday. Short while back to win India's second gold medal at the ongoing Commonwealth Games 2026. So 2 back-to-back golds coming on the same day, viewers. And this is a huge update coming in on Republic TV because we see that this is a blockbuster day as Indian boxing is showing their best performance. I repeat, their best performance. We see 10 boxers are competing in the finals today in various weight classes at the Commonwealth Games. So 2 golds have come in. When we talk about boxing, our Indian boxers and our female Indian boxers really outperforming there. So the gold tally 7, silver 12, and bronze at 6 medals. Huge update coming in, viewers. India shining at the Glasgow Commonwealth Games with historic golds and historic judo goals which came in yesterday. India delivering
huge performances which are extremely doing well in terms of winning these medals. They've clinched historic goals. For example, yesterday, 2 historic goals came in judo, securing a memorable double podium finish in the men's javelin throw. And India also won its first ever bronze medal in decathlon and booking places for 10 boxers in their respective finals. And that is happening today. We see that 2 gold medals have come in when it comes to boxing. Huge updates coming in here, viewers of Republic TV. And we will see right now. Last time we heard India's tally was 25. And looks like India will be moving up the points table. Big updates coming in here, viewers of Republic TV. India's boxers delivering an outstanding performance, with many of them have cleared semi-final bouts. Now 2 gold medals have come in already for India. So India performing extremely well at the Commonwealth Games, viewers, and some historic medals have also come in. Let's put out some of the visuals coming in of celebrations. Now Preeti Pawar celebrating there, the family celebrating the win. Preeti Pawar, of course, making India extremely proud. She has started India's medal counter a short while back at the Glasgow Commonwealth Games with a gold in the women's 54-kilogram event by defeating Scarlett Savannah Delgado of Canada with a unanimous decision of 5-0. It's a blockbuster day, and the entire family celebrating the win. This is the family of Preeti Pawar who are celebrating the win. Let's go ahead and play other reactions. बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हो रही। कठिनाइयाँ तो बहुत आई हैं जी। फिर शुरू में खेलना पसंद कौन था ये प्रीति ने, और या इस खेल में नू करी थी कि इसके काका कोच थे, इसके बॉक्सिंग के कोच, उनकी वजह से इसमें नू लेना चाहिए कि भाई इसमें थोड़ा आगे बढ़ सका। एक तो घर के हो गए कोच, खुद घर के कोच हो गए, और पहले नू 8-10 साल पहले नू सोचा कर दे कि भाई छोरियाँ का थोड़ा बाहर ले जाना में घर का पता और भी वो हो जाओ है विश्वास। उसकी वजह तर कुछ दिन तक तो कठिनाइयाँ इतनी हो, इसका मन नहीं कर रहा था बॉक्सिंग करना। फिर आगे आगे खेल दी गई, हार भी हुई हैं, जीत हुई। जब इसका हौसला बढ़ता गया और बढ़ता अब इस टाइम पर यहाँ पे आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, और पता था, हमें तो पता ही था कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, और पता था, हमें तो पता ही था कि वो कर लेगी। उसकी मेहनत है, आखिरकार रंग लाई है, उसकी मेहनत पे भरोसा था हमें कि वो जीत के लाएगी, गोल्ड भी लाएगी, और बस अभी खुशी हो रही है कि उसने वो कर दिखाया। उसकी जर्नी टफ भी रही है काफ़ी, बट उसने उसको जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ही कमेंडेबल था, हमारे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग था। अभी भी मैं उसकी बड़ी बहन होके, लेकिन मेरी मोटिवेशन का जो सोर्स है वो प्रीति है। Right, Preeti Pawar's family celebrating the taste of victory. This is not a victory just for Preeti Pawar's family, but it's a victory for every Indian, especially every Indian who's watching right now. In fact, Prime Minister Modi has congratulated all these winners, and he's congratulated Harsh Singh on winning gold in judo. He has congratulated all these Indian medalists over the past few days. He's congratulated Neeraj Chopra, Yashveer Singh, and Yamini Maurya on the medal wins. And we're coming to know that India has once again won some more medals. I repeat, India has won 2 more medals at the Commonwealth Games. India has won a silver and a bronze in the triple jump. So big updates coming in here, viewers on Republic TV. Back-to-back updates coming in. After the gold rush in boxing, India gets silver and bronze in the triple jump event. Selva Prabhu wins a bronze medal for India in triple jump. Praveen also winning the silver for India in triple jump. Praveen C winning the silver, and that means that our medal tally has got even higher. I repeat, our medal tally has got
even higher, viewers. So this is a gold rush and it's a medal rush for India. Starting off with 2 golds, now 2 more medals have come in for India. Let's look at the tally for our country. Gold 7, silver 13, bronze at 7. Look at that medal tally, viewers. Indian boxers, Indian athletes today adding more and more medals in India's kitty. This is a huge update coming in, viewers, on Republic TV, where we see India shining at the Commonwealth Games. Indian athletes making every Indian extremely proud today. So that was all the good news coming in. Let's take a look at some of the other stories. We're tracking the prices of commercial LPGs. Finally sees a reduction, thus giving the traders a sense of relief. The price reduction comes into effect in major cities like Delhi and Kolkata, where the price of the cylinder has been reduced by more than rupees 200. The central government on Saturday announced a reduction in the prices of commercial LPG cylinders, providing a relief to the traders. Metro cities like Delhi and Kolkata saw an immediate effect, with prices reducing by more than rupees 200. The price of the 19 kg commercial cylinder in Kolkata is now at rupees 2,872.50, while Delhi sees a reduction with rupees 202 cut from the actual price. This comes even as the West Asia war continues to impact global energy supplies amid disruption at the Strait of Hormuz. The war has impacted the daily life of workers and households who were dependent on LPG for their daily survival. We was getting you some more updates coming in. Authorities in Nepal's southern plains have eased curfews in many areas after a week of tension and violence. Curfew was lifted in parts of areas just like in Siraha, while restrictions remain in Gol Bazar due to security concerns. Although curfews have been relaxed, gatherings of more than 5 people, rallies, demonstrations and public meetings remain banned in many areas. Harmony rallies have been organized to promote peace and unity. Officials said the situation is gradually returning to normal and urged people to follow restrictions to maintain peace and communal harmony. Violators will face legal action. Nepalese Prime Minister has also called for calm after clashes between Hindu and Muslim groups in the country's south have left 3 people dead. Shah, who has rarely appeared in public since taking office in March, broke that silence on Thursday with his first major address to the nation. He urged citizens to act responsibly and help remove the clouds of unrest. So, pictures are coming in on your screen. These are the pictures showing you riots in Nepal, and there has been an appeal made for peace in the region. This is one of the biggest flashpoints that we're seeing in Nepal in years. Violence had begun and spread across multiple regions. And viewers, let's move ahead right now to some of the other stories we're tracking coming in. Just after the terror attack by Lashkar Front that killed 2 civilians in Kulgaon, 2 controversial statements have been made. Once again by the National Conference. National Conference Minister Javed Rana is now calling for talks with Pakistan a day after the terror attack. Meanwhile, Farooq Abdullah links the terror attack to statehood demand. Now, this is very important for our viewers to understand, because we have seen that the NC leaders have again and again pushed for talks with Pakistan, and in the same time, they have been making calls for statehood. In fact, they were in Delhi holding a protest over the same issue. Let's go ahead and play out the reactions. एक सवाल जो है, क्या आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग जो है वो स्टेटहुड की डिमांड से लिंक कर रही है? क्योंकि आज सुबह रिपब्लिक से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहा। कुछ भी हो सकता है। मैं कहूंगा कि यहाँ क्योंकि देश की लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने
इस बात का क्रेडिट भी लेना चाहा कि हमने 370 को तोड़ के रियासत को डिग्रेड करके हालात ठीक किए हैं, और हालात ठीक नहीं हैं। ये किलिंग हो रही है, इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है। तो ये कहीं भी ये चीज जा सकती है। मैंने पहले भी कहा, मैं डिमांड करता रहा हूं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन यहां बैठाया जाए और इन सब चीजों को देखा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। पाकिस्तानी आतंकियों का नाम भी आ रहा है इसमें, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान पे तो कोई एतबार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान तो हमेशा इंट्रिग करता रहा है 47 से लेकर आज तक, और पाकिस्तान तो लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कौन करेगा? पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैसे कंट्रोल हो? 56 इंच का सीना तो आपके पास है। कंट्रोल कैसे करेंगे? 56 इंच का सीना इस्तेमाल करें ना सर। टॉक्स होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, इसको टॉक्स होनी चाहिए। टॉक्स में अगर आप 56 इंच का सीना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बातचीत करें। ये अफसोस है, इसे हमारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं। सर, अटैक हुआ 2 कुलगाम में जो है 9 लोकल्स मारे गए हैं। सुरक्षा अमरनाथ यात्रा के दौरान दोनों जो हैं बाहरी थे। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, ये उग्रवाद की जो रोज उग्रवाद से जो किलिंग हो रही है, अब इस पे बयान दे दे के हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग थक गए हैं। अब हमारी ये हालत हो गई है कि हमारा दिल ही नहीं करता हम इस पे बयान दें। जब एक साइड सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि उग्रवाद खत्म हो गया, और आप लोग ही दिखाते हैं कि आज इस इलाके में 2 मिलिटेंट रह गए, उसमें 3 मिलिटेंट रह गए, उसमें 4, और खुद कहीं पीछे कुलगाम में तो कहते थे सफाया हो गया, मिलिटेंट है ही नहीं है वहां पे। तो फिर ये 2 लोग कैसे मारे गए? चंद रोज पहले एक हमारा सिपाही जो है वो अनंतनाग में शहीद हो गया, कैसे मारा गया? ये कौन लोग हैं? कौन लोग ये किलिंग कर रहे हैं? उग्रवादी हैं या कौन से लोग हैं? जब भी स्टेट का दर्जे की बात शुरू होती है कि स्टेट का दर्जा बहाल करो, कोई ना कोई किलिंग हो जाती है। हम तो अब इसको इस नजर से देखना शुरू हो गए हैं। और मैं होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जम्मू कश्मीर में एक हाई लेवल इंक्वायरी करिए इन मुद्दों पे कि ये किलिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। एक साइड जब सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं कि हालात ठीक हैं, और जब दूसरी साइड, अब तो यहां जम्मू कश्मीर में यूटी है, अब तो स्टेट है नहीं, अब तो सीधी सेंटर के हवाले सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो फिर किलिंग कैसे? आगे तो कहते थे ये जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन कराते हैं, तो अब कैसे हो रहा है? ये उग्रवाद कहां से आ रहा है? इसलिए मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि होम मिनिस्टर साहब से, कि जब 22 सरण में हुआ, पुलवामा में हुआ, उस समय ही एक हाई लेवल इंक्वायरी जो करनी चाहिए थी और सामने साथ चाहना चाहिए। आपने कहा कि जैसे स्टेट की बात आती है तब किलिंग शुरू हो जाती है, आपको क्या शक लगता है कौन हो सकता है? मैंने यही तो कह रहा हूं, क्योंकि हम शक करना शुरू हो गए। अभी हम जंतर मंतर पे धरना दे के आए हैं चंद रोज पहले, और इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। All right, let's go straight across to Major General G.D. Bakshi, defense expert, who's joining us on the phone line. Major General, what we see after the dastardly Kulgaon terror attack, we have seen that the National Conference once again is pushing for talks with Pakistan. Now, we have seen them push for talks with Pakistan again and again, year after year. This is something very, very important because Rajnath Singh, Defense Minister, has said that what happened in Operation Sindoor is the kind of talk that Pakistan really needs, nothing more. He is absolutely right. The only kind of talk that we need to do Pakistan is through the bloody guns. What is the doubt about the sovereignty of India and the inclusion of Kashmir in India? Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession legally, period. Finished. Finito. No further bloody questions or answers. It is you want to talk to Pakistan, you get lost, you go to Pakistan, man. You settle down there and you will see what is happening to the people of POK. Haven't you seen that? आपको गोली खानी है पाकिस्तान की फौज की. You know, the bloody simple fact is, every year during the Yatra season, the Pakistani ISI, the Pakistani terrorist modules try and finger. You know, when the passes open, when the snow melts, their infiltration routes open and they try and get through. You cannot hermetically seal a border.
1 or 2, 3 or 4 will get through at various times. Right. The answer is to attack onto the other side and make sure he is deterred from doing this. Instead of that, these people want us to talk to them, to encourage them to send more. And they want to come into power, have full power in Jammu and Kashmir so that they can encourage, facilitate infiltration. Yes, sir. They have made an industry out of it. Absolutely, sir. Trying to oppose the Indian government, trying to oppose the Indian state, and trying to take advantage of every little terrorist incident to talk with Pakistan, surrender to Pakistan. We have sorted out Pakistan. And you leave it to us. You worry about your own job. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely, sir. Major General G.D. Bakshi, defense expert. Thank you for joining us here on Republic TV. Taking a short break, viewers, do not go anywhere. Madhya Pradesh CM Mohan Yadav warns against religious conversion and says those involved in religious conversions in tribal areas to be jailed. Stay tuned. केसरिया से मन जोगी हुआ रे दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट अब बताओ स्वाद आया असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH. We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but, you know, we got to smack them a little bit. The United States has launched airstrikes on Iran hours after President Donald Trump warned Tehran of a strong military response. The strikes mark the first major American attack since Trump paused the bombing campaign last week. Trump had earlier vowed to hit Iran very hard after an Iranian missile attack on an American base in Jordan. Within hours, US forces launched retaliatory strikes, escalating tensions across the Middle East. We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but, you know, we got to smack them a little bit. Yeah, I think more so that, yeah, because it was another smaller event. But no, they sent 8,000-mile-an-hour missiles at us. And fortunately, we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Nobody else could do that but us, yeah. US forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on US forces based in the Middle East.
The escalation comes after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed responsibility for a missile attack on a US airbase and command center in Jordan. The US military says all the missiles were intercepted. Even as airstrikes continue, CENTCOM says it is strictly enforcing the American blockade against Iran. As of July 29, US forces have redirected 20 commercial vessels, disabled 2 and boarded 2 others. With Washington and Tehran exchanging attacks once again, fears of a wider conflict in the Middle East are growing. The big question now is whether the confrontation will stop here or spiral into a larger war. अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुई और वो नारा देते प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से MTH का जलजीरा जीरा से जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। रानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना है क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुई और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित UPA ने पॉलिसी वैक्यूम करा,
वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. जेनजी की भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग। We are seeing what's happening in national capital and throughout the country from last 1 year. And हम लोग नेशनल कलेक्टिव के स्टेज पे हैं, हम लोग रिपब्लिक के स्टेज पे हैं। मेरी टीवी की जर्नी शुरू हुई 2017 से, जब रिपब्लिक टीवी भी शुरू हुआ। एंड what I loved about Arnab is that what's different is Arnab's commentary that he offers solution. क्योंकि चिल्लाना तो बड़ा आसान है कि ये हो गया ख़राब, वो हो गया ख़राब। तो ये जो पूरा मामला है जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, उस पर आपने सोल्यूशन सुना क्या कभी तक किसी ने? सोल्यूशन सुना कि भाई पेपर तो आपने सबने कोई तो पेपर लिखा ही है, सबने अपने स्कूल के एग्ज़ाम लिखे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखे हैं। भारत में एग्ज़ाम नहीं होते, वर्ल्ड ओवर देयर एग्ज़ाम्स, राइट। दीपके जी तो अमेरिका से आए हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होते हैं उनके मुँह से मैंने कभी नहीं सुना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो दिखते हैं, जो लेफ़्ट पार्टीज से हैं, उनकी जो सो कॉल्ड उनकी जो आइडियल कंट्री है चाइना, वहाँ पे कैसे एग्ज़ाम होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन एंड देखते हैं भारत कहाँ खड़ा है उसमें, और हम थोड़ा संवाद रखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग भी हैं, युवा भी हैं। अभी तक जो आपने देखा, आपने सोल्यूशन सुना क्या कोई? अगर मैं वहाँ पे चिल्लाऊंगा कि मेरा लिंग मेरी मर्जी, उससे नीट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? अगर मैं ब्राह्मणों को गाली दूंगा वहाँ पे खड़े होकर, तो मेरा नीट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज को सुनते होंगे, वहाँ पे प्रेमानंद महाराज को गाली दी गई, उससे नीट का पेपर सॉल्व होगा क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। वहाँ गंदी मतलब मैं गाली तो क्या, उसका टाइटल भी नहीं बोल पाऊँगा, आपने सुनी होंगी रील्स में, उससे नीट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं सॉल्व होगा। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले चलता हूँ। हम लोग हिस्टोरियंस हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़ें, कि एग्ज़ाम में चीटिंग करना तो नई बात नहीं है। अभी आपने एक कैजुअल स्टेटमेंट सलमान खान का सुना होगा, अभी किसी में वीडियो में वायरल हो रहा था कि कैसे उनके पास एग्ज़ाम का लीक का पर्चा आ गया और उन्होंने एग्ज़ाम लिख दिया अपना। मतलब सलमान खान इस समय 60 साल के हैं, जब वो एग्ज़ाम देते होंगे तो 40 साल पुरानी बात है। मतलब 40 साल पहले भी पेपर लीक होते थे, चीटिंग हुआ करती थी। भारत में पहली बार, थोड़ा क्विज भी खेलेंगे, पहली बार अगर किसी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट में चीटिंग, नकल, पेपर लीक, इसके विरुद्ध कानून बनाया, किसने बनाया? कुछ याद आ रहा है? बल्कि अभी भी अब जिस स्टेट में हैं हम, उसी ने बनाया, किसी ने नहीं, योगी आदित्यनाथ, और पहले कल्याण सिंह। बहुत सही, बहुत बढ़िया सर। तो कल्याण सिंह ने 1992 में चीटिंग के खिलाफ पहला, भारत में कहीं भी सेंट्रल में कोई कानून नहीं था, किसी स्टेट में कोई कानून नहीं था। देखिए, आप कितनी भी बड़ी गलती कर दें, पुलिस आपको तभी पकड़वाएगी जब उसके खिलाफ कानून होगा, क्योंकि चीटिंग करना कोई गलती नहीं मानी जाती थी। मैं डांट सकता हूँ, अलग बात है, मैं आपको एज ए मास्टर, एज ए टीचर उठा के यहाँ बैठा दूँ, वहाँ बैठा दूँ, लेकिन मैं आपको कानून में तभी बुक कर सकता हूँ अगर उसके खिलाफ कोई कानून हो। तो पहली बार 1992 में यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बना और चीटिंग का, आप मानेंगे नहीं, मतलब जो पासिंग परसेंटेज था यूपी स्टेट का, वो मात्र 20% रह गया। मतलब 20% लोग ही पास हुए। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं कल्याण सिंह के समय का 12th पास है मेरा, मतलब बिना चीटिंग वाला। आज भी आपको लोग मिल जाएंगे ना, मतलब दे विल ऐड कि इतनी परसेंटेज है, वो कहेंगे 64 है, बट ब्रैकेट में कल्याण सिंह है, राइट, ठीक है। अब इसके बाद सुनिए, वो आपको सुन के मतलब आपको आश्चर्य भी होगा, आप सोचेंगे कि मतलब मेरा सिर फोड़ें कि अपना सिर फोड़ें। अगली बार उसके बाद बाबरी ढांचा गिरा और सरकार कल्याण सिंह की गिर गई। कल्याण सिंह एक दिन के लिए जेल गए और फिर कन्वेंसिंग शुरू हो गई। 2 बड़ी पार्टियां साथ में आई, सपा और बसपा साथ में आई। एक नारा चला मुलायम सिंह यादव, काशी राम ने कहा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और वो लोग चुनाव जीत भी गए। मुलायम सिंह यादव का एक तो ये नारा था, दूसरा नारा क्या था चुनाव में? दूसरा, एक तो उनका नारा सबसे इंपॉर्टेंट था मिले मुलायम, क्योंकि उस समय राम लहर थी, तो उन्होंने कहा कि राम लहर को डाउन करेंगे, हम जाति के नाम पे खेलेंगे, यादव दलित साथ में आएंगे, चुनाव जीतेंगे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा। दूसरा नारा क्या था?
दूसरा आ रहा था कि ये चीटिंग के विरुद्ध जो कानून है उसको खत्म कर देंगे, उसको उन्होंने ब्लैक कानून कहा, मतलब बच्चे चीटिंग कर सकते हैं। ये आदमी चुनाव की रैली में बोल रहा है और बिल्कुल ट्रू टू देयर वर्ड्स, जैसी आए उन्होंने एक हफ्ते में वो कानून खत्म कर दिया। मतलब आप चीटिंग कर लो, आप चीटिंग कर लो, ठीक है। अब 98 में कल्याण सिंह फिर से, हाँ एक बात, वो जो कल्याण सिंह जो कानून लाए थे वो अध्यादेश था, वो भी कानून नहीं बन पाया था, उसके पहले उनकी सरकार गिर गई। अब 98 में आपको पता है कल्याण सिंह दोबारा से मुख्यमंत्री बने, और हाँ जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे पहली बार तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? राजनाथ जी। तो बेसिकली राजनाथ जी ने कानून, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री का है तो राजनाथ जी, कल्याण सिंह ने जिन्हें, ये सब लोग अवेलेबल हैं अभी, कल्याण सिंह जी तो नहीं रहे लेकिन राजनाथ जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि चीटिंग कहाँ से आई ना, बात किसने कब करी, कैसे आई, तो हमको इतिहास पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी वो 1 महीने में जंतर मंतर में कभी नहीं सुना, मैंने सब सुन लिया वहाँ, कचौड़ी पकौड़ी, मेरा लिंग मेरी मर्जी, ये इसको गाली उसको गाली, जो जिस बात का आंदोलन है उसके बारे में मैंने कुछ नहीं सुना। तो मैंने कहा कम से कम इस माध्यम से लोगों को ये तो पता लगे कि मुद्दा क्या है, ठीक है। 98 में कल्याण सिंह फिर आए और अब उन्होंने उसको एक्ट बना दिया। अब एक्ट बनाने के बाद हटाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, वो एक्ट बना दिया। आपको पता है आसपास के राज्यों से लोग यूपी में 10वीं 12वीं का पर्चा इसलिए भरते थे बिकॉज यहाँ पे चीटिंग माफिया अवेलेबल है, मतलब बिल्कुल दुकान लगी, इतना पैसा दो एग्जाम पास हो जाओ। परसेंटेज के भी मार्क्स थे कि 60% लाने हैं तो इतने % लाने हैं तो उतना पैसा दे दो। तो पंजाब से, हरियाणा से बहुत सारे लोग यूपी में अप्लाई करते थे कि यहाँ से पास हो जाएंगे, ठीक है। अब 2003 में फिर से मुलायम सिंह यादव आ गए। अब वो एक्ट बन चुका था तो हटाना तो मुश्किल था, क्योंकि एक्ट को हटाना मुश्किल होता है, अध्यादेश को, ठीक है, आप एक्ट में मत कन्वर्ट करो। तो उन्होंने कहा उसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसको इस्तेमाल मत करो उस एक्ट का, ज़्यादा पुलिस मत भेजो, ज़्यादा जांच मत करो, ज़्यादा पकड़ो ही मत किसी को, तो उन्होंने उसको सॉफ्ट कर दिया, ठीक है। मायावती आई, उन्होंने फिर भी थोड़ा सख्ती से यूज़ करा उसको। फिर आ गए हमारे पढ़े लिखे अखिलेश जी 2012 में, उन्होंने मंच से कहा, मतलब आप स्पीच में आपको सुना दूंगा कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए चीटिंग थोड़ी बहुत कौन नहीं कर लेता। वाइल सिटिंग चीफ मिनिस्टर इन रैली जहाँ बहुत सारे यूथ हैं सामने, वो चीटिंग को जस्टिफाई करा उन्होंने कि भाई चीटिंग कौन नहीं कर लेता, और वो चीटिंग कंटिन्यू होती रही उत्तर प्रदेश में, चीटिंग माफिया कंटिन्यू रहा। उत्तर प्रदेश में माफिया वो थे कि अगर आप नोएडा में होंगे तो किडनैपिंग माफिया होगा, मेरठ में होंगे तो कार चोरी माफिया होगा, अगर आप बुंदेलखंड में होंगे तो सैंड या बालू माफिया होगा, अगर आप पूर्वांचल में होंगे तो रंगदारी माफिया होगा। वहाँ बने हुए थे, तो उसमें पता था कि इसका किंग पिन मुख्तार अंसारी है, इसका किंग पिन कौन है, वो सब सेट था उत्तर प्रदेश में, और उसको सबको पॉलिटिकल पैटर्नेज था। पॉलिटिकल पैटर्नेज ये सारे लोग विधायक सांसद थे, नॉट ओनली पॉलिटिकल पैटर्नेज, दे वर पॉलिटिशियन देमसेल्व्स, ठीक है। अब एक और बहुत मजे की चीज़ हुई उत्तर प्रदेश में, जो जैसे यूपीएससी होता है जो आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति करता है, ऐसे स्टेट में भी एक कमीशन होता है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं, जो एसडीएम से मतलब यूपीपीसीएस की भर्ती करता है। उसका जो चेयरमैन होता है, अब इन्होंने करा, एक व्यक्ति हैं अनिल कुमार यादव, उसको बना दिया। 2 साल बाद हाई कोर्ट को उनकी भर्ती रद्द करनी पड़ी। अब जो हाई कोर्ट की जो पिटीशन है उसे पढ़ेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि उनकी क्यों भर्ती रद्द करनी पड़ी। उनके पास ऐसे वो आए एप्लीकेशंस आई कि एसडीएम की 86 भर्ती हुई, उसमें से 56 यादव। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मतलब ठीक है कॉन्फिडेंस हो सकता है 86 में 56। अब देखा कि मार्क्स कितने आए, तो इनके रिटर्न में तो मार्क्स कम थे, इंटरव्यू में सबको 140 सबको लाइन से 140 मार्क्स, और बाकी सबको 120 मार्क्स। 20 मार्क्स में तो आपको पता ही है ऐसे एग्जाम्स में तो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। पहली बात, फिर देखा गया इनका सीवी है कि एलिजिबल थे। इन्होंने लिखा कि हम एक स्कूल के, उसकी एलिजिबिलिटी थी आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हों एटलीस्ट। अब देखा वो तो फर्जी है, वो तो कभी किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ही नहीं रहे। जो सबसे आखिरी बात है, उसे देख के आप चकित हो जाएंगे। जब आपको सीवी भेजना होता है तो आप भेजते हैं किसी तरह से, फैक्स से आया उनका सीवी, यूपी लोक सेवा आयोग के ऑफिस में उनका सीवी फैक्स से आया। कहाँ से आया? समाजवादी पार्टी के ऑफिस की फैक्स मशीन से आया। और इससे ज़्यादा ब्लैटेंट कुछ हो सकता है। और फिर उनको उनकी भर्ती रद्द हुई। अब जब 2017 आया तो योगी आदित्यनाथ ने उस कानून को फिर से इस्तेमाल करा, और उस समय अगर आप याद हो तो दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, अभी शायद राज्यसभा सांसद हैं, वो मेयर रहे लंबे समय लखनऊ के, अगर आप लोग लखनऊ से हैं कोई, तो उन्होंने फिर से उस लॉ को यूज़ करा जो कल्याण सिंह ने करा था, और बहुत ज़ोर से उसको इम्प्लीमेंट करा। कम से कम 10 लाख लोग ने कम लोगों ने एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया 10वीं 12वीं का। मेरी दिनेश शर्मा जी से बात हुई, मैंने अपनी किताब में डॉक्यूमेंट भी करा, उन्होंने टेक्निकली बताया कि 4 तरीके क्या होते थे जो अखिलेश जी के समय में चीटिंग माफिया था, वो 4 तरह से कैसे चीटिंग करता था। बिल्कुल टेक्निकल, आप सुन के दंग रह जाएंगे अगर आपको नहीं पता है पहले से। तो पहला मेथड था सॉल्वर मेथड।
कि मेरी जगह शांतनु गुप्ता की जगह मैं किसी व्यक्ति को पैसे दूंगा, मुझे तो आता नहीं है वो सब्जेक्ट, तो मैंने किसी को पैसे दिए और वो मेरी जगह लिखने चला गया। आइडेंटिटी छोटे से कार्ड में कौन देखता है, इतने सारे बच्चे आते हैं, हल्का सा चेक करा चला गया, नाम लिख के दे दिया, एक फर्जी कार्ड बना के, आइडेंटिटी कार्ड बना के, ठीक है। तो मैंने पूछा कि सर आपने सॉल्व कैसे करा? करा अब हर जगह मोदी जी के टाइम से 14 से आधार सीडिंग सेंट्रल एग्जाम्स में होनी शुरू हो गई, तो वही बच्चा जा पाएगा जिसका आधार है और वैलिडेट है, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। शायद विश्व में शायद ही कोई ऐसी कंट्री हो जहाँ पे आधार सीडिंग से आप किसी की, या थंबनेल सीडिंग से, आई स्कैन सीडिंग से आप उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर पाएँ। तो ये टेक्निकल सॉल्व हो गया, बहुत बड़ा मेथड था सॉल्वर मेथड। ये जो मैं आपके पहले 3 मेथड बताऊंगा ये सारे इन सेंटर मेथड है, मतलब सेंटर में आने के बाद चीटिंग होती है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है मास चीटिंग। मास चीटिंग मतलब आप सब एग्जाम में बैठे हैं, मैं उस स्कूल का मालिक, किसी स्कूल में होता है ना, किसी प्राइवेट स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में, मैं इन्विजिलेटर हूँ, मैंने ही सबको पेपर पढ़ के बता दिया आंसर, पहले का बी लिखो, दूसरे का सी लिखो। अब कोई चेक ही नहीं कर रहा है, और वो सेंटर लिए इसलिए गए हैं क्यों? वो सेंटर की बड़ी मार मस्ती थी उत्तर प्रदेश में कि सेंटर मिल जाए, मेरा स्कूल सेंटर बन जाए या मेरा कॉलेज सेंटर बन जाए, क्योंकि सेंटर अगर मुझे मिल गया तो मैं चीटिंग करवाऊंगा। और चीटिंग कैसे करवाऊंगा? और चीटिंग क्यों करवाऊँ? क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। देखिए चीटिंग तो इंसेंटिव है दुनिया में ना, एक कलयुग में चीटिंग तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि भाई किसको मेहनत करने का मन है। अभी ऑफिसर ने बताया इतनी मेहनत से वो जिस रैंक पे पहुंचे, किसको मन है? तभी कुछ लोग बिरले ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो मास रैंकिंग को कैसे रोका? सेंटर के नॉर्म्स बन गए, सेंटर की बाउंड्री वॉल इतनी बड़ी होनी चाहिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा, कंट्रोल रूम्स बने जिससे हर सेंटर वेरीफाई हो, सेंटर कम कर दिए, एक शहर में एक ही सेंटर हो जिससे पुलिस को ज़्यादा गश्त ना लगानी पड़े, सेंटर लिमिटेड हुए, सबकी मॉनिटरिंग। तो इन सेंटर जो फर्रे वाली चीटिंग थी, जो मास चीटिंग थी, जो डिक्टेट करके चीटिंग थी, वो खत्म हो गई। तीसरी चीटिंग तो बहुत ही क्रूअल है, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए क्रूअल है। मतलब जैसे कॉपी लिख दी मैंने, तो अच्छे बच्चे की कॉपी से पन्ने खींचे और जिससे पैसे लिए उसकी कॉपी में लगा दिया आखिरी के कुछ पन्ने। उसको तो पासिंग मार्क्स चाहिए, उसको कोई फर्स्ट नहीं आना है, उसको तो पास हो जाना है बस, है ना। अब ये दिस इज सो क्रूअल ऑन द पार्ट ऑफ द फर्स्ट गाय हु इज ब्रिलियंट, राइट। अब क्या करा, आप कॉपी में कोडिंग करी, हर पेज में कोडिंग करी, जैसे आप पासपोर्ट में देखते हैं आपके हर पेज पे आपका पासपोर्ट नंबर इम्प्रिंट होता है हल्का सा, जिससे आप कोई भी पेज अगर मिसमैनेज करें तो पता लग जाए कहाँ से आया। वही जो चौथा मेथड है जिसकी बात हो रही है वो है पेपर लीक। वो सबसे मुश्किल तरीका है, वो सबसे मुश्किल है उसको कैंसिल आउट करना। ये आउट ऑफ सेंटर मेथड, ये सारे तो सेंटर के अंदर हुए। अगर मैं सॉल्वर भेजा, मैंने सेंटर में भेजा, मैंने मास चीटिंग कराई सेंटर के अंदर करवाई, मैंने कॉपी फाड़ी तो सेंटर के अंदर हुआ जो हुआ। अब पेपर तो कहीं और होता है। अब ये पेपर लीक सबसे मुश्किल क्यों है आप लोगों को समझ में आएगा, और इस बार आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। और चाइना में तो आर्म फोर्सेस के इस्तेमाल से ही पेपर होते हैं। एक बहुत बड़ा पेपर है वहाँ का, गाँव बोल के 1.5 करोड़ लोग देते हैं। वो जो सेटर होता है उसको 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। भारत में ये करेंगे तो एक और जनता मंत्र में प्रदर्शन होने लगेगा, अरे आपने टीचर को बंद कर दिया। क्योंकि सेटर तो सबसे खतरनाक है, आप उससे चल उसके तो दिमाग में पेपर है, तो आप उसको आपको बंद नहीं करना पड़ेगा। वो चाइना में बाद में आते हैं। पेपर लीक में दिक्कत क्या है? देखिए पेपर लीक क्या, आप लोगों को मैंने एक ग्रुप बनाया, आप लोग पेपर सेट कर रहे हैं। पहला तो सबसे पहला सस्पेक्ट तो आप ही हैं। उसके बाद इसको टाइप सेट करेगा, टाइप सेट मतलब इसको ढंग से टाइप करेगा, बनाएगा, 1 2 3 ऑप्शन बनाएगा, वो टाइप सेटर दूसरा व्यक्ति है। फिर ये कहीं जाके प्रिंट होगा पेपर। अब मेरे पास 2 ऑप्शन में, सेंट्रलाइज प्रिंटिंग करूं या मैं डिसेंट्रलाइज प्रिंटिंग करूं। मतलब मैं दिल्ली में सारे पेपर प्रिंट कर दूं या फिर तमिलनाडु में एक करूं, महाराष्ट्र में एक करूं, दोनों में अपने प्रॉब्लम है। सेंट्रलाइज करूंगा तो ईजी है कि मैं उसको पुलिस कर सकता हूं, उस प्रिंटिंग प्लेस को। डिसेंट्रलाइज में मैं कितनी जगह पुलिसिंग करूंगा, है ना। अगर मान लिया मैं 100 जगह प्रिंट कर रहा हूँ तो 100 जगह उस लेवल की डेडिकेशन ऑनेस्टी हो पाएगी क्या? जितना डिसेंट्रलाइज होगा मुश्किल हो जाएगी प्रॉब्लम। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या है, आपको ट्रांसपोर्ट लंबा हो जाएगा, आपको दिल्ली से तमिलनाडु भेजना पड़ेगा, दिल्ली से महाराष्ट्र भेजना पड़ेगा, दिल्ली से मणिपुर भेजना, दोनों के अपने ट्रबल है। अब आप चेन देखिए, सेटर एक व्यक्ति हुआ, टाइप सेटर हुआ, फिर एक प्रिंटर हुआ, फिर जब वो ट्रैवल करेगा तो उसका एक ड्राइवर होगा, उसमें क्लीनर होगा, फिर वो सुबह सुबह तो पहुंचेगा नहीं, किसी स्टोर रूम में रहेगा, वहाँ पे गार्ड होगा। यू आर एबल टू फाइंड कितने लोगों को एक फोटो खींचना है, बस फोटो खींच के कोई। आजकल के मॉडर्न जमाने में, पहले तो मुश्किल था क्योंकि पहले आपके पास इतने सारे लोग व्हाट्सएप पे नहीं थे, इतने सारे लोग टेलीग्राम पे नहीं थे, तो पेपर लीक करना भी बड़ा मुश्किल होता था। अब तो क्या है, आपने फोटो भेज दिया और उसकी इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है। क्यों इंसेंटिव बहुत ज़्यादा? एक पेपर भेजा 5 लाख में। कौन ऐसा ट्रक ड्राइवर है जिसको 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, पीछे माल पड़ा है, उसको फोटो खींचनी है, माल चोरी भी नहीं करना है, बस उस माल की फोटो खींच के भेज देनी, उसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर देखा है कि वो पेपर किस तरह से सील होते हैं, पैकेट होते हैं, वो सब प्रोसेस आते गए ओवर ईयर्स, राइट। अब इसमें जो नीट का पेपर है वो खास है। मैं चाहता था कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं जंतर मंतर में सुनता तो मुझे लगता कि हाँ ये सच में दे आर ट्रू टू द टॉपिक, दे आर नॉट ट्रू टू द टॉपिक, आई विल कम टू दैट। नीट पेपर के लीक होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ऑफिसर साहब। क्यों प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? वर्सेज लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से मैं आपको क्विज करता हूँ, यूपीएससी का पेपर, आईआईटी जेईई का पेपर और नीट का पेपर, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नीट के पेपर के लीक होने की है। इंसेंटिव सबसे ज़्यादा लीक होने का, क्योंकि यूपीएससी का पेपर में क्या 3 स्टेज का पेपर होता है।
पहले आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेन देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं। अब मुझे एक माफिया मिला, उसने कहा मैं आपको प्रीलिम का पेपर देता हूँ, मैंने 10 लाख रुपए दिए, अब मुझे एडवांस का लीक ही नहीं करा पाया, तो अब मैं भाई अब मैं तो बुद्धू बच्चा हूँ, तभी तो मुझे पेपर चाहिए। मैंने अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो मैं एडवांस तो क्लियर कर ही नहीं पाऊंगा अपने आप, तो मुझे तो फिर भी चाहिए। अब वो माफिया बार बार पेपर लीक करवा पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। तो जो भी मल्टी स्टेज पेपर होते हैं उनके लीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जो वन एंड डन बोलते हैं इसको, एक पेपर दिया और आपके वारे न्यारे हो गए, मतलब एक पेपर दिया और आप एम्स दिल्ली पहुंच गए। तो नीट का पेपर वन एंड डन है, मतलब एक ही पेपर से इतना बड़ा आउटकम आता है। बाकी हर पेपर में कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। दूसरी ट्रबल क्या आती थी, आज से 10 साल पहले आप लोगों ने सबने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको हर स्टेट का अपना इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता था, हर स्टेट का अपना मेडिकल का एग्ज़ाम होता था। तो 2014 में जो सरकार आई उसने सबसे पहले इस प्रॉब्लम को टैकल करा और सारे जितने इंजीनियरिंग हैं उनके एग्ज़ाम को IIT JEE में कर दिया। मतलब कुछ जगह तुम मेन का स्कोर ले लो, तुम एडवांस का स्कोर ले लो, ठीक है। सारे जितने भी स्टेट के इंजीनियर मेडिकल के टेस्ट थे उनको कंबाइन कर दिया। उसमें बहुत बड़ी एंटी नीट लॉबी भी है, पता आपको पता है एंटी नीट लॉबी क्यों है? कि एंटी नीट लॉबी इसलिए है, खासकर साउथ में जितने भी मेडिकल बड़े कॉलेज हैं वो पॉलिटिशियंस चलाते हैं। तमिलनाडु ने तो बहुत समय तक नीट में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, वो अपना एग्जाम चलाते रहे। क्योंकि अगर आप नीट के थ्रू क्या होता है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो जाती है, आप कोटे से सीट ही नहीं दे पाते, क्योंकि कोटे की एक सीट 2-2 करोड़ रुपए की जाती थी। अब आपको सेंट्रलाइज जो फीस है जो सरकार ने निर्धारित करी है वो तो कपल ऑफ लैक्स में है, उसमें आपको सीट बाउंड करनी पड़ती है। तो इसलिए नीट का विरोध हुआ। जब नीट कंबाइन हो गया तो बच्चे के लिए बहुत आसानी हो गई। आपको एक एग्जाम लिखना है, पहले अगर आपको याद हो तो आपको मल्टीपल एग्जाम्स लिखने पड़ते थे, सबकी एंट्रेंस फीस होती थी, सबके लिए ट्रैवल करना पड़ता था, सबके सेंटर अलग होते थे, सबकी काउंसलिंग अलग अलग होती थी और क्लैशिंग डेट्स होती थी। और कई बार क्या होता था, एक में एडमिशन मिल गया, अब यहाँ पे पैसे आपको एडमिशन सिक्योर करना है, दूसरे का रिजल्ट आया नहीं अभी तक। अब क्या है, सेंट्रलाइज एग्जाम है, उसमें अपनी चॉइस लिखते हैं, आपके सेंटर आ जाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नीट बहुत बड़ा पेपर हो गया, क्योंकि सारे लोग वही लिखने लगे। पहले कोई तमिलनाडु का एग्जाम लिखता था, पहले कोई महाराष्ट्र का एग्जाम लिखता था, अलग अलग लिखते थे। अब क्या 22 लाख लोग नीट ही लिखने लगे। अब इसका तरीका वर्ल्ड ओवर केवल या तो चाइना मॉडल, देखिए चाइना मॉडल को मैं मॉडल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो चाइना में ही संभव है कि आप सेटर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसके बाद मिलिट्री व्हीकल से सारे पेपर उनके ट्रांसफर होते हैं, मिलिट्री ऑलमोस्ट पूरा एग्जाम कंडक्ट कराती है। उसके बाद भी पिछले 10 साल में 3 बार उनका पेपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। ये सब करने के बाद भी 10 साल में 3 बार पेपर अलग अलग पार्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उनका। उसका केवल तरीका है, आप लोगों ने किसी ने GRE GMAT अगर टोफल दिया हो, आज से 25 साल पहले मैंने करीब 2020 में GRE GMAT टोफल दिया था, जब मेरी पढ़ाई वहाँ हुई थी बाहर। तब भी मैं CBT मतलब कंप्यूटर पे लिख के आया था, तब ऑप्शन हुआ करता था पेपर, अब तो ऑप्शन ही नहीं है अब तो। लेकिन वो बड़ा महंगा, उसकी $100 $200 फीस होती है, उतने तो हमारे एग्जामों की फीस तो 2-3 हज़ार रुपये होती है। प्रोमेट्रिक बोल के सेंटर्स हुआ करते थे और उन्हें डम मशीन्स बोलते हैं। डम मशीन मतलब उसमें इंटरनेट नहीं होता है, उसमें आप स्क्रीन भी नहीं चेंज कर सकते, मतलब मॉडल पुराना है, सॉर्टेड आउट है। जब 2014 में सरकार आई, उन्होंने कहा दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन जिसके थ्रू आप एग्जाम लीक्स रोक सकते हैं। मेरा तो मानना है जो भी पेपर प्रिंट होगा, मतलब अगर वो लीक नहीं होगा तो आई विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि आपने देखिए ना चेन ऑफ कमांड, आप देखिए ना वो सेटर है, फिर वो एक उसका पहले एग्जाम कोई बना रहा है, फिर उसको टाइप सेट कर रहा है, फिर उसको प्रिंट कर रहा है, को 6 जगह ट्रैवल से जा रहा है, फिर वो स्टोर रूम में है। इतनी सारी उसमें ट्रैवल लाइन्स हैं कि उसकी लीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप कितनी पुलिसिंग कर पाएंगे? उसका केवल तरीका है CBT। अब CBT क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, मान लिया 200 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, मान लिया किसी एग्जाम में 200 क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हैं भाई CBT में भी सेटर तो है ही कोई ना कोई, सेटर तो फिर भी लीक कर सकता है, उसके पास लिखा हुआ उसके दिमाग में है। तो क्या करा जाता है, मल्टीपल सेटर ग्रुप बनाए जाते हैं। मान लिया 200 क्वेश्चन 25 थीम से हैं, 25 मतलब एक थर्मोडायनेमिक्स से है, एक केमिस्ट्री से है, एक बायोकेमिस्ट्री से है, ऐसे 25 टॉपिक से 200 क्वेश्चन बनने हैं। हर क्वेश्चन या हर टॉपिक के अलग अलग सेटर बेस बनाए जाते हैं, मतलब कोई तमिलनाडु में है, कोई इसमें है, और हर मान लिया पहला 200 में से पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में आना है, तो उसी के 500 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स पे एक हार्डनेस लेवल के 500 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे और एल्गोरिथमिकली उस दिन वो 200 क्वेश्चन अपीयर हो जाएंगे। किसी को पता ही नहीं होगा कि इन सेटर का पेपर आया, कि इन सेटर का आया, कि उसका आया, कि उसका आया। तो यू मेक ए लार्ज डेटाबेस ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपको 200 क्वेश्चन के लिए 50,000 क्वेश्चन बना देंगे। और उससे, और ये मैं कोई नई टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, ये फिगर्ड आउट है, बहुत सारे एग्जाम दुनिया भर में होते हैं, भारत में भी होते हैं, उसमें आता हूँ। तो ये टेक्निक फिगर्ड आउट है। अब क्या हुआ, सबसे पहला एग्जाम 2019 में IIT JEE का CBT बेस्ड हो गया। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 6 साल से IIT JEE, आपको पता है IIT JEE और UGC नेट साल में 2 बार होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब बेस्ट ऑफ 2 चलता है ना, ये बल्कि हर एग्जाम के साथ होना चाहिए, क्योंकि एक अटेम्प्ट मुश्किल होता है। एक अटेम्प्ट के साथ आपके साथ कुछ हो गया, आपके घर में लाइट चली गई, बीमार हो गए, घर में कुछ हो गया, तो कम से कम 2 अटेम्प्ट तो एक साल में मिलने चाहिए इस तरह के बड़े एग्जाम्स के, क्योंकि अभी एग्जाम बड़े हो चुके हैं, क्योंकि इन्हीं से सारे एडमिशन्स होते हैं। ऑल इंजीनियरिंग रोल टू JEE,
all central university roll to CUT, all PhD roll to UGC NET, all medical exam roll to NEET, right? तो जो 12 लाख 14 लाख बच्चे करीब IIT JEE लिखते हैं, वो पिछले 7 साल से, पिछले 6 साल से केवल कंप्यूटर सेंटर पे CBT जाके एग्ज़ाम लिख रहे हैं 2 बार। पिछले 3 साल से UGC NET मतलब PhD के लिए जो एग्ज़ाम होता है, वो सारे बच्चे 12 लाख बच्चे करीब UGC NET CBT कंप्यूटर बेस्ड लिख रहे हैं। तीसरा एग्जाम CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब आपको अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेना है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन लेने का जो एग्ज़ाम है CUT, वो पिछले 2 साल से ऑनलाइन CBT हो रहा है। और CBT में बिल्कुल कोई स्कोप ही नहीं है ना, मतलब लोग कह सकते हैं EVM, जैसे लोग EVM से लोगों को दिक्कत है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि CBT डम मशीन होती है। डम मशीन मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है, उसमें आप स्क्रीन तक नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें आप 2 ऑप्शन है बस, वो क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन क्लिक करो, नेक्स्ट दबाओ, बस इतना ही उसमें ऑप्शन होता है। आप स्क्रीन चेंज अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो सबसे सेफ तरीका है, रिजल्ट भी उसमें जल्दी आता है। अब आप कहेंगे भाई नीट क्यों नहीं कर दिया फिर, जब इतनी आपको पता है तो नीट क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि आज तक किसी सरकार ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो CBT का है, दिट्स नॉट अ वेरी इजी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बनाना सैंक्टिटी के साथ बनाना बड़ा। तो अब भारत में अच्छी बात है, कम से कम 8 से 9 लाख सीट्स रेडी हो चुकी हैं बिटवीन 7-8 वेंडर्स। कुछ उसमें गवर्नमेंट PSUs हैं, बल्कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी एक कंपनी है। बैंक PO के करीब 1 करोड़ लोग अलग अलग बैंक्स लेते हैं, सब ऑनलाइन होता है। रेलवे के सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं पिछले 6-7 साल से। ये बात मुझे आज तक सुनी नहीं कभी मैंने कई लोगों के साथ बैठा, पिछले 1 महीने में रिसर्च करी, मुझे भी नहीं पता थी, थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं पता था। जब मैंने पता करना शुरू करा भाई ये सॉल्व होगी कैसे प्रॉब्लम, तब पता लगा कि आधी सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम भारत में, कुछ एग्जाम्स बचे हैं केवल। अब क्योंकि नीट सबसे बड़ा एग्जाम हो गया है, 22 लाख लोग देने लगे हैं, उतनी कैपेसिटी अब डेवलप हो जाएगी। और उसका भी प्रपोजल आ गया था, ऑलमोस्ट इस साल आ गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे पास रूरल सेंटर नहीं खुल पाए, और नीट ऐसा एग्जाम है जो सबसे रूरल लोग भी देते हैं। IIT JEE कंपेयर टू PhD कंपेयर टू CUT, सबसे ज़्यादा लोग जो एग्ज़ाम देते हैं वो नीट एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पे बात फंसी हुई थी। अब आपको लगता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चला जाएगा क्या? और ये सब जो हुआ है ये भी किसने करा है? ये भी इन्हीं 3 शिक्षा मंत्रियों ने करा है। तो आई थिंक हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को सतर्क रहना पड़ेगा। एनीवन हु केयर्स फॉर देयर कंट्री, उनको सतर्क रहना पड़ेगा। और अपने आसपास आपका सबका बहुत डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है, उस डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस में मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉर है उसको हमको कॉन्स्टेंटली टैकल करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but, you know, we got to smack them a little bit. The United States has launched airstrikes on Iran hours after President Donald Trump warned Tehran of a strong military response. The strikes mark the first major American attack since Trump paused the bombing campaign last week. Trump had earlier vowed to hit Iran very hard after an Iranian missile attack on an American base in Jordan. Within hours, US forces launched retaliatory strikes, escalating tensions across the Middle East. We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but, you know, we got to smack them a little bit. Yeah, I think more so that, yeah, because it was another smaller event.
But no, they sent 8,000-mile-an-hour missiles at us. And fortunately, we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Nobody else could do that but us, yeah. US forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on US forces based in the Middle East. The escalation comes after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed responsibility for a missile attack on a US airbase and command center in Jordan. The US military says all the missiles were intercepted. Even as airstrikes continue, CENTCOM says it is strictly enforcing the American blockade against Iran. As of July 29, US forces have redirected 20 commercial vessels, disabled 2 and boarded 2 others. With Washington and Tehran exchanging attacks once again, fears of a wider conflict in the Middle East are growing. The big question now is whether the confrontation will stop here or spiral into a larger war. अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से, MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। आर प्योर सूजी पास्ता, उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा, आर प्योर मसाला। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में।
37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, प्रश्न है कि खंड से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ, स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized. But, you know, we got to smack them a little bit. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. A very warm welcome. You're watching live and breaking. I'm Rakshita Mishra with you. Let's get started with the headlines that we're tracking for you this Saturday afternoon. Headlines brought to you by Canara Bank. Together we can. 2 labourers killed in terror attack in Kulgam of Jammu Kashmir. Massive search operations underway to neutralise the terrorists. Pahalgam rerun in Kulgam. Hindus targeted by terrorists in the dastardly terror attack. Mastermind of Pahalgam behind Kulgam terror attack identified as Lashkar Sajid Jatt, the same terrorist behind the cowardly Pahalgam attack. India shines at CWG. Medal tally rises to 27. 7 gold, 13 silver, 7 bronze as of now. Ashmita De makes history at the Commonwealth Games as 23-year-old from Tripura becomes the first Indian to win gold medal in judo.
Neeraj Chopra wins silver. Yashbir Singh bags the bronze at Commonwealth Games in javelin throw in Glasgow. India's total tally rises. And the FCRA bill to be tabled in Lok Sabha next week. Amit Shah to lead the debate. We have breaking news coming in now, viewers. This is in connection with the Kulgam terror attack. Now, the big update is that the migrants' family, the Hindus who were attacked in Kashmir, their family says that they were asked about the religion. Deepak is one of the terror victims who has been killed. And the family of Deepak says that he was asked about his religion before he was killed. Now, this is an exact repeat, a rerun of what happened in Pahalgam, where first religion was asked. They were asked, the victims were asked to recite the kalma, and then they were killed. Lashkar terrorists shot dead victims after establishing religion, as per the statement coming in from the victim's family. Deepak's family says the nephew was asked about his caste and community by terrorists. Deepak and Bhupendra, two migrants from Chhattisgarh, were killed. All right, we have Gursimran Singh joining us live on the broadcast for more. Gursimran, well, it looks like a rerun of what happened in Pahalgam. Now, the family of one of those who have been killed in this attack say that they were asked about the religion and then they were killed. Yes, Rakshita, this is what the family of the victim Deepak has alleged. Two Hindu laborers were fired upon by the terrorists backed by the Pakistani terror group Lashkar-e-Toiba. Now, because if you remember that this is complete rerun of what we have seen during the Pahalgam also, because they were asked their religion and fired upon. Yesterday, what we are picking up from the sources in the Jammu and Kashmir police, at least the top brass is denying such claims. They are saying that there were only two laborers there, and since most of the laborers that work in the brick kiln, they are the migrant laborers, so there need not to be any such need for... Hello? What has been said about them, about the incident by the relatives, by the family of the victim. We'll try and connect with my colleague Zeenat, or we'll try and connect with Gursimran to get more details on that, because viewers, this is coming in as Pakistan is crumbling. Whenever Asim Munir gets desperate, and when he sees that Pakistan is breaking apart, when he is facing pressure from POJK and it's slipping away, when Balochistan is slipping away, he resorts to these dastardly tactics. He resorts to these attacks, as we have seen in Pahalgam also. And Gursimran is back with us. Gursimran, tell us more details about this incident as far as the family member statement is concerned. Looks like a rerun of the Pakistani design during the Pahalgam attack. Yes, Rakshita, I hope I am audible this time to you. Now coming to this incident that has been reported yesterday evening, the family members are saying that this has been a rerun of what has happened in Pahalgam, that the terrorists came, asked them about their community, caste and religion and all these details, and then they are fired upon them. Though we try to confirm it from the sources in the Jammu and Kashmir police and the top brass also, the top brass is denying stating the fact that all those who work in the brick kilns, they are mostly the migrant workers. So there is a low possibility of any rerun. Now, since it was, there have been some conflicting reports that emerged that there were 2 to 3 terrorists that were there. But what we are picking up, that this is a handiwork of a single terrorist. It is similarly on the lines what has happened in the Anantnag, when Ashik Hussain of the 3rd IRP battalion was fired upon in the broad daylight by the terrorist of Lashkar-e-Toiba, and he unfortunately succumbed to the injuries. So this was a second such attack. There was an input that was generated by the police with regards to such attacks to take place, but unfortunately it could not be averted, and 2 precious lives have been lost. The family says that it was their religion was asked and then they were fired upon, but what the police is saying, they are saying that only 2 people were there, both have been fired upon. So that is the part of investigation that the police is going to investigate all the angles. Also the fact that we see this happens also when there is something brewing in Pakistan, like even prior to Pahalgam.
we saw that how Balochistan, there was a lot of protests, there were attacks on the Pakistani army also by the Baloch rebels. And now we see, again, when Balochistan is slipping away and POJK is witnessing an uprising like never before, we see that Pakistan is resorting to these diversionary tactics and, of course, its design of target killing, and which has been going on for time and for years now, just to disrupt peace that has been restored after Article 370 is abrogated. Rakshita, you have absolutely mentioned correctly that it has something to do with the Pakistan and the situation in Pakistan occupied Jammu and Kashmir. Reason being, see, this attack comes after 2 hour and 43-minute long press briefing by the DGI SPR yesterday, in which he has blamed India for everything that is happening in Pakistan. And then he has said that, see, India is doing this, that. And then in the evening, this attack takes place. Today, if we speak of the situation in the POJK, they have forced these protesters to actually give a halt call. The long march has also been halted. So all these things are what it seems is an attempt to divert from what is happening internally, because it is not only the POJK that is in the troubling waters, but also the situation in the Khyber Pakhtunkhwa and the Balochistan that is almost similar or rather worst. Reason being that those areas have slipped out of the hands of the POJK. So this is really very concerning for Pakistan, and this might be one of the ways Pakistan is trying to divert the attention, because see, whatever happens in Jammu and Kashmir, whatever the terror groups do, this cannot be done without the involvement and a green signal from the Pakistani deep state. That is the reality, that is the written reality. Because if we speak to the agencies here also, they were of the view that Pakistan has told the terror groups not to go against the security forces or the civilians and lay low. That was what the exact words. And after the Eid in the month of April, it was cleared for the security agencies that now things are going to be in the troubling waters. They are going to carry out terror attacks. All right, many thanks, Gursimran, for joining us with details coming in on that story. Now, viewers, we keep a close eye on the developments that are happening in Jammu and Kashmir. Meanwhile, we shift our focus to the world of business, and that's a big story that we're tracking from the world of business now. And it's a big breaking news that Republic Business is closely tracking. It could be the biggest, the insurance sector could be on the verge of biggest overhaul, as Republic Business has reliably learned that the much-awaited insurance reforms document by the IRDAI is expected by the end of July, and we understand is that there could be just biggest changes coming in just a short while from now. Our Public Business editor Arnab Goswami brings you more on this. Well, the insurance industry may soon have to rewrite its rule book after years of criticism over mis-selling, opaque commissions and excessive dependence on intermediaries. The insurance regulator, the IRDAI, is now preparing to unveil a landmark reforms document that could fundamentally change how insurance is sold in India. Now, Republic Business has reliably learned that the reforms paper, which was expected earlier this month, is now likely to be released by the end of July. Now, sources also tell Republic Business that the regulator is actively considering doing away with hefty upfront commissions paid to insurance agents. Only months ago, in fact, one of the reports, the Praxis Global Alliance report, raised certain uncomfortable questions about the industry's dependence on intermediaries. For this, in fact, we have Vishal Bhave, a practice leader at Praxis Global Alliance, who is joining us. Vishal, thank you very much for joining us on Republic TV. Thank you, Pranav. So Vishal, let's start by understanding that keeping both insurance and customers in perspective. Now, is the current commission-led distribution model bleeding the insurance industry? So life insurance by definition is a long-term contract, right? Where the premiums are are typically same throughout the tenure of the policy. It's a long-term contract. You should take life insurance when you're looking at something more than 10 years pure. Whereas if you look at general insurance, typically they are yearly contracts, whether it's health or motor, right? So motor insurance is typically a yearly contract. There are two components to motor insurance. One is third-party insurance, which is mandatory by law. Basically, that is the damage which can happen in case of accident to a third party, someone outside your vehicle, right? Similarly, there's a second component which is called own damage. Now, that own damage is discretionary. It's not mandatory.
though it's necessary and highly recommended, everyone should have it. It's not mandatory technically. Life insurance typically gets sold largely through agents, brokers, and banks, right? Whereas for motor insurance, there's an additional element where largely it gets sold through agents or brokers. But at the time of new vehicle purchase, large part of the sale happens through the car dealers from where you go and purchase your vehicle. So that's the fundamental difference as far as the distribution piece is concerned. From the third party insurance, third party component is concerned, it's mandated by law. For motor, for private vehicle or four-wheeler, for 3 years you have to take when you buy a new car. And for two-wheelers, it is for 5 years, right? And own damage, when clubbed with third party, is called comprehensive insurance, right? But that own damage component has to get renewed every year. So that's one thing which I think all our viewers need to really understand. But Vishal, you say that third-party insurance is compulsory for every vehicle owner. But why are commissions placed on mandatory third-party insurance in the first place? And what does it actually mean for consumers? Why are consumers paying commissions for a product that is already mandatory? So there are certain administrative costs involved, KYC, documentation. More importantly, if there's the promise of the distributor to be present with you or help the consumer at the time of claims. So that's where the commission component comes in as an effort for his rewards. Secondly, you will be fairly shocked to know that despite being mandatory, around half the vehicles plying on India's roads today are not covered by third-party insurance. Right. So what it means is it's like a helmet is mandatory today, right? But how many people actually wear a helmet on two-wheelers? The third-party insurance, while it's mandatory, a lot of vehicles on the road, more so two-wheelers in the hinterland, are not insured. So there is this scope and incentive nudge to push distributors to ensure that 100% coverage is achieved. So that's really the logic for third-party insurance, for commissions on third-party insurance. But are they justified by the distribution effort involved? In fact, the question is, why do insurance products such as motor insurance carry such high commissions, as much as 30 to 50%, as has been highlighted not just by IRDAI but even by your report? So there is intense competition for market share, number one. Number two, over the years, motor has unfortunately become a fairly commoditized sort of a product where the brand salience is low, right? Unlike a life and health where the brand salience is slightly high. But motor, not many people just look at the pricing, they'll just look at the convenience and, just end up buying the product, right? So what we've seen in our research and the survey, the report which we brought out through Praxis, is that almost 50% there is churn in terms of customers switching insurer every year for own damage or for comprehensive after 3 or 5 years. And similarly, many of them don't even recall the name of the insurer through whom they have taken that, right? So that's the reality, and hence what is happening is that there's a lot of commission-driven competition where to get that market share, and which has ended up pushing the commissions to a higher rate. But Vishal, are car dealers or insurance agents at all equipped to advise customers on choosing the most relevant car insurance policy for them? Yeah. Okay. The insurance sale through the car dealers is governed through MISP, that's called Motor Insurance Service Provider Guidelines, right? So there are certain norms around it. Having said that, practically, I think this is one thing which is all our consumers and viewers need to really understand. When one goes to buy a new car, right? Typically insurance is shown as bundled as part of the on-road, so-called on-road price, right? So you have your car variants which you want to choose. Then there are accessories which you select. Then there is a RTO or a registration component, right? And there is insurance, and all inclusive. The dealer shows you one sheet which says that this is the total on-road cost of the car. Now, my recommendation is that the insurance should really be unbundled from this entire car package, right? Why? Because it is not necessary that you buy the insurance from the car dealer at the time of sale, right? Nobody can stop the consumer to buy insurance either through his or her own agent or through direct company websites or aggregators, etc., and then compare that with what the dealer is offering you. Because if there is a commission involved, high commission involved at the dealership level, invariably the cost
will get passed on to the consumer in terms of the premiums, right? So Vishal, would it be right to say that the policy holders or consumers are directly or indirectly paying these commissions and bearing the brunt of the high commissions or the high intermediary incentives that they are being made to pay for policies that are mandatory? See, in some way it would, right? Because at the end of the day, you are paying if the commission paid to the dealer. Again, that depends on case to case because it's a fairly dynamic market. One cannot have a one size sort of an answer, one size fits all sort of an answer, right? So possible that dealer A, the manufacturer A versus a manufacturer B of the car dealer, there could be a difference in commissions which the insurance company is passing on, right? So one can't have a general rule. What I'm trying to say is that if you find that the insurance being sold through the dealership is at a higher cost or through some brands, if the dealership is pushing some brands which you are not comfortable with, you are not bound by it, right? While I understand that the leverage is high with the dealer when you're going and buying a car from there, you need not, really follow that. You want to do it out of your own choice. Absolutely, you have that right, and if you're comfortable with the dealer, please go ahead. Mr. Vavi, thank you very much for joining us. We will continue to stay connected with you as we follow this very, very important story and keep coming back to you as the story unfolds further. Thank you very much for joining us on Republic Business. Now, critics have long argued that the current commission structure actually encourages sales over suitability, often leaving consumers with products they neither fully understand nor actually need. This is precisely what, in fact, experts say, that if the regulator in fact proceeds with these reforms, it could make a shift from rewarding more sales to rewarding long-term customer retention and better policy servicing. The big question now is, will these reforms finally put the policy holder ahead of commissions, or will the industry resist change that threatens one of its biggest revenue drivers? Now, that debate is only just about beginning, because remember, your insurance is your right. And if you have any queries or any doubts or suggestions related to insurance or general insurance, motor insurance, health insurance, or for any type of insurance, you can reach out to us on the number displayed on your screens, because we will be tracking this very, very important story very closely and bring you live when the reforms are actually rolled out. A sudden cloud burst hit Chatru in Kishtwar area of Jammu and Kashmir late last night, unleashing a flash flood through the area. The force of the water swept away several vehicles and damaged property, with authorities now assessing the extent of the destruction. The sudden flooding also disrupted road connectivity, forcing authorities to shut the Chatru-Kishtwar National Highway. Debris was reported along the route as emergency teams moved in to clear the affected stretches. So far, there have not been any reports of fatalities in this horrific cloudburst. However, the administration continues to assess damage and restore normal movement in the affected area. This as the authorities are monitoring the situation closely amid continuing adverse weather conditions across parts of Jammu and Kashmir. चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट? स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और परेशान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में।
37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. जेनजी की भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। अरे सुनो, आगे आप अपना समाप्त फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू डॉक्टर डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आप प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। We're going to hit them very hard. I mean, I can actually say that because there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but, you know, we got to smack them a little bit. The United States has launched airstrikes on Iran hours after President Donald Trump warned Tehran of a strong military response. The strikes mark the first major American attack since Trump paused the bombing campaign last week. Trump had earlier vowed to hit Iran very hard after an Iranian missile attack on an American base in Jordan.
Within hours, US forces launched retaliatory strikes, escalating tensions across the Middle East. We can hit them very hard. I mean, I can actually say that because there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but, you know, we got to smack them a little bit. Yeah, I think more so that, yeah, because it was another smaller event. But no, they sent 8,000-mile-an-hour missiles at us, and fortunately we had our people operating the greatest equipment in the world, namely the Patriot system. Think of it, 5 missiles going 8,600 miles an hour, big ones, coming right at us, and all 5 were shot down. How about that, right? Pretty good. Nobody else could do that but us, yeah. Hello and a very warm welcome to another episode of Our Estate Building the Nation. My name is Nayan and here is your weekly window into the stories, trends and developments shaping India's real estate and infrastructure landscape. Now coming up on the show this week, Goa has seen road investments worth 16,000 crore rupees since the year 2014. Also Guwahati Satellite City Development Authority Bill 2026 sets the stage for a new chapter in the region's urban growth. And as India's expressway network expands, the Delhi-Mumbai Expressway is emerging as a key driver of connectivity, commerce and real estate development. We also bust one of the biggest real estate myths in our Clarity Corner. In 2026, is it better to buy a home or to rent one? In Market Watch, we look at the rise of data centers as one of India's hottest real estate assets, the massive investment India will need in power transmission infrastructure. Plus, in What's New, we travel to Gujarat, where a couple is building a cement-free home in just 15 days using industrial waste. And finally, our ground report takes us to the Ganga Expressway, one of India's biggest infrastructure projects, transforming connectivity and opening new opportunities along its route. Now it's time to get started with the top news. Goa may be India's smallest state by area. But when it comes to roads, it is thinking big. Since 2014, the state has received nearly 16,000 crore worth of road investments, transforming highways, bridges and connectivity corridors across the region. For decades, Goa's infrastructure conversation revolved around tourism. Today, it's about mobility. Better roads mean shorter travel times, faster logistics, easier access to hinterland villages, and stronger support for tourism, hospitality, and business. Infrastructure does not always arrive with fanfare. Sometimes it arrives quietly, one bridge, one bypass, and one highway at a time. And in Goa, those roads are slowly redrawing the state's economic map. Every growing city reaches a point where it can no longer grow inward. It has to grow outward. Guwahati may have reached that moment. The Assam government has introduced the Guwahati Satellite City Development Authority Bill 2026, a move that could reshape urban growth in the northeast. The vision is ambitious. New townships, planned development, better roads and utilities, economic zones built around connectivity and opportunity rather than congestion and chaos. With land already being earmarked around the airport region, the goal is clear: reduce pressure on Guwahati while creating an entirely new urban ecosystem around it. Indian cities are expanding. Guwahati has decided not to wait for the future to arrive. It is planning for it now.
What if Delhi and Mumbai were just 12-hour drive apart? That promise is moving closer to reality. Union Minister Nitin Gadkari has set a 2-year deadline for the completion of the Delhi-Mumbai Expressway while simultaneously announcing highway projects worth Rs 16,500 crore for Rajasthan's Kota region. This isn't just another road project. It is India's logistics spine in the making. The expressway will connect manufacturing hubs, ports, industrial clusters and millions of people across the country's economic heartland. And Kota's massive highway push signals something bigger. Infrastructure investment is no longer following growth. It is being used to create it. In modern India, highways aren't just connecting cities, they are connecting possibilities. Buying a home has long been seen as one of the biggest milestones of financial success. But with the property prices rising, interest rates influencing the home loans and also the rental markets evolving across India, the age-old question remains the same. Should you be buying a home or renting one in 2026? In this week's Clarity Corner, Ashwinder R. Singh ji busts the myths and breaks down what really makes financial sense today. Rent versus buy. Now, this is a discussion that's been happening for decades, but what is so different about this discussion? I think this discussion is about rent versus buy in 2026. And there are a lot of things in 2026 which have changed, whether it is the infrastructure boom that India is seeing, the AI disruption that India is seeing, the hybrid way of working, and so on and so forth. The whole gamut of economics has changed when it comes to 2026. There are 3 myths that I want to break about buy versus rent, especially for 2026. The first myth is that buying is always better than renting. Now, my question is that if you end up buying the wrong home at the wrong time, it is far more expensive than renting the right home at the right time. So, always remember the timing and the decision where you are buying or where you are renting is the most important thing while you are trying to assess buy versus rent. The second myth that I want to break for buy versus rent in 2026 is that rent is wasted money. No, rent is not wasted money. Rent is about flexibility. Rent is about freedom, especially with the current environment, with the disruption that is happening in technology because of AI. There are a lot of reasons that favor you for going for rent, depending on if you need flexibility and if you need freedom. So there is no simple answer, and you have to be very careful that when does buying become the right decision and when does rent become the right decision. Rent becomes the right decision, especially when you want freedom and you want flexibility. The third myth that I want to break in 2026 is that people think that buying versus renting is a financial decision. It is not just a financial decision. It is about where your office is, where your children study, what kind of lifestyle you want, what kind of location are you looking at, and depending on that and your budget, you take a decision whether you want to buy or you want to rent. You might want to buy in a place which you can't afford, but you have to stay in that place because it is near to your children's school, it is near to your office, it makes convenient sense for you, and that is where you go ahead and rent. Otherwise, if everything falls in place and you can afford, you will go and buy. So this is the third myth that I wanted to break. Most of the time when we talk about buying versus rent, the comparison comes between EMI versus the rent that you're paying. And that is where I find this becomes too simplistic. As I've always said, the comparison is not between the EMI and the rent. The comparison is between lifestyle versus lifestyle, the infrastructure. Instead, what one needs to compare is lifestyle versus lifestyle, flexibility, freedom, and above all, peace of mind.
Once you look at everything, you will automatically get an answer whether you need to buy or you need to rent, but cover all these aspects that we have discussed. And 2026, when you're taking a decision between buy versus rent, I'm sure you'll end up taking the right decision. This is Ashwinder R. Singh, and you're watching me on Clarity Corner. India's real estate story is no longer just about homes, offices and shopping centers. As the economy becomes increasingly digital, renewable energy expands and e-commerce reshapes consumption, new real estate asset classes are gaining momentum. In this week's Market Watch, we explore why data centers are emerging as one of India's hottest real estate assets. We also look at ICRA's estimate that India could require $5 to $6 trillion in transmission investment by financial year 2032 to evacuate renewable power and support the country's clean energy ambitions. And with e-commerce, manufacturing and supply chains expanding, warehousing and logistic parks are the fast becoming next big real estate opportunity. Take a closer look. Every digital service relies on data storage and processing infrastructure. Whether it is online banking, video streaming, e-commerce, artificial intelligence applications or cloud services, all of them require data centers to operate. India currently generates some of the world's highest levels of mobile data consumption, and that demand is expected to grow significantly in the coming years. As a result, cities such as Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bengaluru and Noida are witnessing a surge in data center development. Unlike conventional real estate projects, data centers are heavily dependent on uninterrupted power supply, advanced cooling systems and high-speed fiber connectivity. Global investors and real estate developers are increasingly allocating capital towards this sector as businesses continue shifting towards digital operations. For the real estate sector, data centers are no longer a niche asset class. They are increasingly becoming a core part of India's infrastructure and investment story. According to ICRA estimates, India could require between 5 trillion to 6 trillion rupees in transmission investments by financial year 32 to support its clean energy goals. Much of India's renewable energy capacity is concentrated in states such as Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu, while major consumption centers are located elsewhere. This requires large-scale investments in transmission lines, substations and interstate grid infrastructure. The expansion of green energy corridors will also be critical in reducing renewable energy curtailment and ensuring electricity generated from renewable sources reaches consumers. Transmission infrastructure has traditionally received less attention than power generation projects. However, as renewable energy capacity grows, the importance of the grid becomes increasingly evident. Industry experts believe that India's energy transition will depend not only on how much renewable power it can produce, but also on how effectively it can distribute that power across the country. When we think of building a home, one material always comes to our mind: cement. It's been the backbone of construction for decades. But what if someone told you a home could be built without using cement at all and could even turn industrial waste into a resource? In What's New, we head to Gujarat, where a couple is building a cement-free home in just 15 days using industrial waste to create a more sustainable construction approach. Here's the story. Every year, millions of tons of industrial waste end up in landfills, while the construction sector remains one of the world's largest sources of carbon emissions, largely because of cement production.
Looking at both challenges together, Gujarat-based founders Vedant and Aditi Gandhi decided to ask a simple question. What if industrial waste itself could become the building material? I wanted to build something which will go for a longer time, which will be durable, which will be sustainable and also cost effective. So it has a greater adaptability. And that is how we came up with this idea of replacing cement. Their startup Concrete has now developed cement-free building blocks made using industrial byproducts such as fly ash, silica sludge and construction waste. These blocks are then assembled using a prefabricated construction system, allowing a basic home to be completed in as little as 15 to 30 days with a starting cost of 7 lakh rupees. So while I was becoming a civil engineer, like everyone else, I also thought that sustainability and development are two competitors to each other. But as in how I started working with the different organizations in different roles, I understood that cement and the development that we are doing through our concretization of our country is contributing to larger global emissions, and it adds up to 8% carbon emissions every year, which is a huge impact that we are causing to the environment. The founders say they have already delivered more than 450 such homes while recycling industrial waste that would have otherwise gone to landfills. The idea isn't simply about building faster, it's about reducing dependence on conventional cement while giving industrial waste a second life. As India pushes towards a greener infrastructure and sustainable housing, innovation like these are drawing attention because they attempt to solve two problems at once: construction emissions and waste management. So far, using our materials, almost 8 to 10 factories have been constructed in the span of 2.5 years. We've also contributed in construction of multiple municipal infrastructure projects like school buildings, administrative buildings. So administrative building for electricity board has been done using our material. Also, 2 of the schools have been made using our building blocks here in Ankleshwar. Other than that, we have been able to contribute in construction of 450 households which have been made through subsidies that come from the PMAY Yojana. Of course, technologies like these will have to prove themselves over time through durability, scalability and wider industry acceptance. But one thing is already clear. India's future homes may not just be smarter or faster to build, they could also be built with materials we once considered waste. And perhaps that's the biggest takeaway. Sometimes the future of housing doesn't begin with a new skyscraper. It begins by rethinking the very first brick. India's infrastructure boom is redrawing the map of connectivity, and with it, the geography of growth. Stretching across Uttar Pradesh, the Ganga Expressway is designed to connect regions, cut travel time and unlock new opportunities for trade, investment, industry and real estate. But what does this mega infrastructure project mean for the people and places along its route? Our ground report takes you to Ganga Expressway. Uttar Pradesh is India's most populous state with over 24 crore people. Its GDP, its farm output, its manufacturing potential, all of it was being quietly drained by the cost of poor connectivity. And then this, 594 kilometers of road that has changed the equation permanently. India's largest greenfield expressway, built in record time, engineered for the century ahead. This is the Ganga Expressway, from Meerut in the northwest of Uttar Pradesh to Prayagraj in the southeast. The expressway runs 594 kilometers through 12 districts. It passes through 519 villages. It brings roughly 8 crore people within reach. In raw numbers, it is India's largest
build, operate, transfer project ever executed. The expressway was developed by two partners. Adani Road Transport Limited, a subsidiary of Adani Enterprises Limited, built approximately 464 kilometers, roughly 80% of the total length. IRB Infrastructure Limited developed the remaining 130 kilometers. Together, they delivered India's most ambitious road project in a record 3 years and 3 months. Ganga Expressway is a 594-kilometer project, and it is the initiative which has been taken by the UP government to shorten the distance between the eastern UP and western UP, and to cut the travel time from eastern UP to western UP. The Ganga Expressway has shortened the time, that is travel time, from 12 hours to 6 hours. The Ganga Expressway was built at a height of 6 meters, 1 meter above the highest recorded flood level of the Ganga. The road surface uses polymer modified bitumen (PMB) in its bituminous course. PMB is a high performance material that extends the road's functional life significantly beyond standard bitumen, while delivering a smoother, more comfortable ride. Dark fiber optical cable runs the entire 594-kilometer length of the project, a digital backbone that enables faster and more secure data transmission along one of India's most important travel corridors. एडिशनली हमने यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज़ किया है इन फ्यूचर जो AI ड्रिवन डेटा होगा फॉर दैट पर्पस. Across the 464 kilometers built by Adani Enterprises, a crossing structure was built every 860 meters, 437 underpasses and 21 flyovers, ensuring that the expressway does not cut communities in two. Along the expressway, world-class amenity stops have been built. Food courts, fuel stations, motels, cafeterias, shopping plazas and vehicle service centers. These are not afterthoughts, they are part of the design. 14 dormitory complexes, 7 on each side, have been built specifically for long-haul truck drivers, for a community that moves India's economy but has historically been left to fend for itself on the roadside. This is a practical acknowledgement of their role. ईवी चार्जिंग स्टेशन पर छोटी गाड़ियों के लिए अलग है, बड़ी गाड़ियों के लिए अलग है, ताकि दोनों अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने काम कर सकें. ये ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है फास्ट चार्जिंग करते हैं, तो उस हिसाब से एक 30-35 मिनट में जो उनका एक स्टॉपेज टाइम होता है, उसमें आप फूड कैफ़े का भी आनंद ले सकते हैं, और हमारे यहाँ जो आप ईवी चार्ज भी कर सकते हैं, गाड़ी भी चार्ज हो सकती है. More than 100 EV charging stations have been installed along the route, positioning the expressway for the electric mobility transition that India is accelerating towards. The median across the 464-kilometer Adani-built stretch has been planted with saplings, and the Forest Department has added 4.5 lakh trees in avenue plantation along the corridor. 24/7 CCTV surveillance covers the full length of the road. Trauma centers are positioned at regular intervals. For transporters, a highway is not measured only in kilometers. It is measured in time, fuel, reliability, and ultimately profitability. हम प्रयागराज से हरिद्वार 2-3 बार जा चुका हूँ. यहाँ की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और डीजल पेट्रोल पंप पे डीजल मिल जाता है, खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है, और सब कुछ है. लोग कह रहे हैं कि नहीं ये टोल कम, टोल ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. टोल का सही है, हम लोगों का समय बचत होती है ना, और डीजल माइलेज है, कंफर्टेबल, रास्ते में कंफर्टेबल है, नहाने धोने की व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है. The Ganga has sustained this land for 5,000 years. The road that runs alongside it now is built for the next 100. Viksit Bharat 2047. And that's a wrap on this week's episode of Our Estate Building the Nation. From expressways and satellite cities to data centers, logistic parks and new age construction technology, India's real estate and infrastructure landscape is changing
faster than ever. We'll be back next week with more stories from the spaces that are building the nation. My name is Nayan. Until then, stay informed, stay connected, and keep watching Our Estate. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। अनीस, घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। करने का माध्यम बन रही है। साथियों, स्कूली शिक्षा में भी बड़े स्तर पर काम हुआ है। देश भर में 14,000 से ज्यादा PM श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र उत्थान के लिए शिक्षा के साथ साथ समानता को भी उतना ही अहम मानते थे। शिक्षा में भेदभाव न हो, अवसरों में भेदभाव न हो, आज ये देश का विजन बन गया है। आज बेटियां भी सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। NDA में बेटियां राष्ट्र के लिए योगदान दे रही है। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई मातृभाषा में करने की सुविधा हो गई है। इससे भाषा के आधार पर अवसरों में होने वाले भेदभाव पर लगाम लग रही है। साथियों, युवा शक्ति का स्वास्थ्य अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहना उतना ही जरूरी है। जो देश खेलों को महत्व देते हैं, वहां के युवाओं में इन तीनों गुणों का तेजी से विकास होता है। इसलिए आज खेलों को राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जा रहा है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स जैसे आयोजनों ने देश भर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। आज देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से सुविधाएं बढ़ रही है। गांवों से लेकर छोटे शहरों तक नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। और साथियों, आज इस अभियान के परिणाम भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हमारे खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की तरह हमें विवेक का स्मारक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। ऐसे स्थान पर मैं हमारे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं। साथियों, मैसूरू को अक्सर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान मिला है।
मैं इसके लिए यहां के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। क्या इस अवसर पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि भविष्य में स्वच्छता के संकल्प को निरंतर मजबूत करते रहेंगे? हमें यहां की प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करना चाहिए। हमें पर्यावरण से जुड़े संकल्प लेने चाहिए। हमें पानी की हर बूंद बचाने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। साथियों, आज ही यहां वाल्मीकि रामायण के कन्नड़ा अनुवाद का विमोचन भी हुआ है। मैं कन्नड़ा भाषा से जुड़ी एक अपील भी करना चाहता हूं। कर्नाटका महान लेखक और कवियों की धरती है। कन्नड़ा भाषा, कन्नड़ा भाषी लोग हमेशा से पढ़ने की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। स्मार्टफोन के इस युग में इस स्वभाव को और बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या हम युवा पीढ़ी को कन्नड़ा साहित्य से गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? साथियों, मैसूरू अपने सिल्क, चंदन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जब भी हम किसी को उपहार दें तो क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो किसी भारतीय के हाथों और पसीने से बनी चीज हो? इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एक और परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह के भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने का दायित्व आज की पीढ़ी पर है। मुझे विश्वास है विवेका स्मारक इसके लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करेगा। मैं एक बार फिर यहां एकत्र पूज्य संत जनों, गुरु बंधुओं और मैसूर के लोगों को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Chief Prime Minister, for your inspiring words and for dedicating Viveka Smaraka to the service of the youth and the nation. You are gracious. All right, that was the Prime Minister speaking in Mysuru of Karnataka, hailing the youth of the nation. A big message from the Prime Minister to the nation's youth, hailing the youth that's driving India's growth story, from sports to science, to the world of startups, to the world of corporate, to the world of to different milestones being achieved in different spheres. India education system also lauded by the Prime Minister. Also talking about the education, especially in context of the youth of Karnataka, he was speaking. Also hailing how India's youth has contributed to the historic milestone in space. That was the Prime Minister's mega message from Mysuru to the youth of the nation. All right, we have now breaking news coming in connection with the Kulgam terror attack. The family of one of the victims, Deepak, says that Deepak was asked about his religion before he was killed. Now, viewers, this comes as a rerun of what happened in Pahalgam, April 2025. In South Kashmir now, 2 migrants, Hindus, are killed after reportedly asking their dharma, their religion, about their caste, which community do they belong to. Lashkar's design of target killing at play once again. After establishing religion, the Lashkar terrorists gunned down the 2 Hindu migrants in Kulgam, and that's the breaking news we have right now. The family of the terror victim have made this revelation. Let's take a listen in. 31 जुलाई 2026 की रात्रिकालीन मुझे 12 बजे लगभग पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि इस तरह से
आतंकी हमले में दीपक को गोली लगी है करके उस समय पूरा तरीके से पुष्टि नहीं हुई थी। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के प्रवासी 2 मजदूर थे, एक बलौदा बाजार का रहने वाला है और एक मेरे भतीजा दीपक रात्रे है। और उसके अब उसको आतंकियों ने इस तरह से बेरहमी से उसकी हत्या की है कि आप सभी को बता दें कि वो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि नक्सलियों ने जो आतंकियों ने उसको जाति समाज पूछ करके गोली मारी गई है। ये आतंकियों का कारनामा है। ये देखिए कि उसको जाति पूछ करके जाकर के गोली मारी है और एक मजदूर के ऊपर में गोली चलाना। तो ये कहता हूं मैं शासन से इसके अनुरोध करता हूं कि इस तरह से जो घटना के बाद में हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। Colleague Zeenat is joining us live on the broadcast from Srinagar. Zeenat, well, it's a big revelation that has been made by the victim's family that Deepak, who was one of the migrants who have been killed, was asked his religion before the attack. See, Rakshita, there are certain developments that are coming to fore now because it's been around 20 hours as far as the terror attack in the Kulgam is concerned. What I'm picking from the sources is that before carrying this crime, there was a person who had come in a black attire. He was having a kind of a jhola or a bag in his hand, and he sat with the family. He sat with Bhupendra and Deepak's family for around 15 minutes. He asked them for a water which was provided by the family, and their conversation lasts for 15 minutes or so. Then he opened the weapon from the bag he was carrying and he shot Deepak and Bhupendra from a close range. That tells you that it's not only the hit and run thing. It's more like there was a proper plan, a proper recce where this terrorist had come and met the family. He had a conversation with them. I asked for a water. And then in his bag, he was carrying that AK-47 rifle that was used as a terror weapon at the crime scene. And then he fired upon them from a close range. This is something very big challenge for the coming month if the threat is not neutralized, because as the investigating agencies are connecting the dots here, that from Anantnag, in which a JKP, the cop lost his life, and now in less than 10 days, another crime has been committed, because in Anantnag, the name was coming of the same terrorist who's involved in it, and obviously being a Lashkar part, so Pak-based terror organization this is, so they are also having their players very much on the ground. And will the situation escalate now in the Kashmir Valley, because the migrant killings had almost stopped? The last time was witnessed in 2024 in February, and then there was a pause of almost 2.5 years. But now is it more an indication that there will be more migrants targeted, although the situation by the government is being maintained? They are trying to maintain a situation that there is no fear created, because in Kashmir we have lakhs of laborers who come from different parts of the country to fetch for the livelihood, to earn their livelihood. What will be the impact on those laborers? Because we have seen in 2024 when the killing started, that time many of the laborers left the place because of the fear that every evening these laborers, the low middle class population, the people from the outside, the migrant workers, or for that matter the non-locals would get targeted. But that had really stopped in all these years. But yesterday's killing has really rattled this kind of laborers, the kind of the migrant force that is present in the Kashmir. And now the J&K police, we are seeing that wherever this population resides, some of them are in the rented accommodation, and some are living in open air in the Kashmir Valley, where they have erected their tents and other things. So it is more like a makeshift accommodation. The security around those structures so those places have been strengthened, or is it like that the more forces will be targeted? So really challenging time. It is going to be a difficult situation
situation, and if at all they are not able to neutralize the threat, because yes, in Anantnag also we have seen that for days the chaos continued in South Kashmir. The number of units were increased as far as the security apparatus is concerned, and apart from increasing the number of security personnel on the ground, yesterday terror crime was committed by the Lashkar-e-Toiba, and yesterday the 2 people lost their life, the individuals lost their life. What kind of messages the terrorists are sending, and how far they will go on for these kind of crimes, or whether the police, the army will neutralize, if at all they are able to neutralize. So it is going to give a blow, and that may help to contain the situation in the Kashmir Valley. That the government, the security apparatus, the intelligence agencies have to see that how to regain the confidence among the population in the valley. Is there an alert in Srinagar and other parts of Kashmir as well? See, as far as Rakshita, we have been covering this kind of situation for a very long time. This is a protocol, or we say this is a standing operation procedure that is followed usually when there is this kind of attack. When an whenever there is an attack in any part of the country, rather. So these are the drills that are followed. But important is the result. How the security apparatus is delivering on the ground, how they will contain the situation, and how will they stop that this should not flare up, or this should not increase the further fear among the population, or there shouldn't be more killing like this. So they have to see that the threat, or the people, the terrorists, the organization, their structure, their support that is helping them to carry these kind of activities, how much time they will take to neutralize that threat. Right, many thanks, Zeenat, for joining us with details coming in on that story. Now we are shifting focus to Prime Minister Modi's roadshow in Mysuru, viewers, cutting across to those visuals. All right, that is a grand roadshow in Mysuru after that speech hailing the youth of the nation. Now the Prime Minister is taking out that roadshow in Mysuru. In Karnataka, you can see is flanked by the supporters who are waving to the Prime Minister to catch a glimpse of the Prime Minister there in Mysuru. He has inaugurated the Viveka Smaraka today at the Sri Ramakrishna Ashram in Mysuru. He hailed the youth of the nation there, and now, in fact, it's a cultural youth center. Swami Vivekananda Cultural Youth Center and Vivek Smaraka as a tribute to Swami Vivekananda. And now he is on a roadshow. You can see those visuals coming in. There's, of course, heavy security, and you see that supporters are lined up there in Mysuru. And we have the Prime Minister now in Mysuru. Prime Minister's visit, and it's a roadshow that we see right now in Mysuru. He was earlier received by Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot and Chief Minister D.K. Shivakumar, and now we have just this afternoon he inaugurated the Smaraka, and now we see him taking up this roadshow. Abhishek joins us on the phone line from Bengaluru. Abhishek, well, it's a roadshow. People gathering in large numbers on both the sides to greet the Prime Minister, waving at the Prime Minister, to catch a glimpse of the Prime Minister as he also delivers a powerful message for the youth of the nation. Well, the people in Mysuru wanted to witness the stage where Modi spoke to and addressed the entire nation with respect to the importance of youth when he kept in mind Swami Vivekananda. And at this point of time, when Prime Minister Modi arrived to Mysuru, the people who were wanting to wave their hand at Modi couldn't do that because he traveled on the helicopter to the main event. At this point of time, the people who have been waiting for the last couple of hours, finally their dreams have come true because Modi's convoy is taking as slow as possible, waving at the people. And for the people of Mysuru who wanted to witness this scene or the scenario of their beloved Prime Minister, and this is one such scene. We have also seen the visuals of people climbing on the top of the high-storied buildings and also water tanks to just make sure that they have a glimpse of Prime Minister Modi.
On the other hand, we've also seen Prime Minister Modi, who addressed the nation the importance of the youth empowerment, and he also kept into the consideration Swami Vivekananda while he addressed the entire gathering, and how Swami Vivekananda changed the entire world's view on India. So there were various other submissions or information shared by Prime Minister Modi when he visited Mysuru today, and we will have to see how this unfolds in the next couple of days, because CM D.K. Shivkumar also spoke highly about Prime Minister Modi, and this might be a political reason as well, because there are some of the issues that are happening between Tamil Nadu and Karnataka for the steering of Kaveri water. It might be another motive of D.K. Shivkumar to speak highly of Prime Minister Modi to make sure that he intervenes between these two states, or there might be some of the political calculations. Rashita. All right, Abhishek, many thanks for joining us with details coming in on that story from the Prime Minister's visit to Mysuru in Karnataka. Now we shift our focus to the breaking news coming in from the world of business. Viewers, Republic has accessed the FIR filed against Anil Ambani and Reliance Capital. CBI case has been based on the complaint filed by EPFO, a 1,816 crore rupee fraud, viewers. So more trouble coming in for Anil Ambani. CBI FIR names ex-chairperson Anil Ambani as accused number 2. EPFO has complained against Reliance Capital and Anil Ambani, mentioning ongoing cases, irregular lending, diversion of funds, need investigation. That's been mentioned. EPFO says that Reliance Capital default preceded by fraudulent transactions, sufficient grounds for investigation into commission of offences. EPFO complaint sought FIR and investigation into Anil Ambani's role. So this is a big update coming in. Viewers, Republic TV has accessed the FIR. Atul, my colleague, joins us on the broadcast for more. Atul, if you can just detail to us what the FIR mentioned and how big a trouble this is for Anil Ambani now. Well, during 2013 and 2014, the Reliance firm, which was owned by Anil Ambani, issued the secured NCDs in which the EPFO invested huge money, 2,500 crore rupees something. This investment was about to mature in 2024, but before that, all this money were allegedly withdrawn by the firm, and allegations are on Anil Ambani. The EPFO investigated this and they lodged a complaint with the Federal Probe Agency, which is CBI, and also in the meantime, the CBI also received several complaints from the consortium of bank. Now, the CBI has lodged an FIR. It was lodged on 31st of July, and in coming days, the CBI might be summoning Anil Ambani to join the investigation. The CBI has mentioned in its FIR that the EPFO suffered a wrongful loss of rupees 1,000, and also there is a liability of interest of around rupees 800 crore. So total wrongful loss is about 1,800 crore rupees, which the EPFO suffered. And based on all these allegations, the FIR has been lodged. All right, many thanks, Atul there. Joining us with details coming in on that story. Republic TV accessing the FIR in Anil Ambani, the case against Anil Ambani. Now we shift our focus to good news coming in from the world of sports. Viewers, it's from Glasgow. 14th silver now for India. Boxer Jadumani Singh wins silver in men's 55 kg final. More medals coming in. India's medal streak continues there. And now you have the para shot putters also doing India proud. Boxer Jadumani Singh winning silver at the CWG. Indian para shot putters Soman Rana and Shubham Juyal also clinching the gold in F57 category and silver respectively in Glasgow CWG. That's the big breaking news we have right now. So it's medals galore for India. And before that, we had another a women's boxing medal. Preeti Pawar had clinched gold in boxing. And in fact, from weightlifting to athletics to boxing, India has been
Indian team has been doing the nation proud. 8 gold, 15 silver, 7 bronze, and it keeps sticking, viewers. It keeps sticking. The best part is that we have to keep on changing this every hour. You can understand how India's sporting prowess is only and only increasing, and Indian athletes, apart from the usuals who we see doing India proud, there are more youth of the nation who were little known before that. Now they are making a name for themselves and the country. So this is another visual you have from the latest medalist podium finish, another podium finish for the country in the CWG. Shifting focus now to the valley, viewers. Cloudburst struck Chatru in Jammu Kashmir's Kishtwar district early this morning, triggering a sudden flash flood. Several vehicles were swept away and property was damaged. No casualties been reported so far. The Chatru-Kishtwar highway was temporarily shut, but as of now it has been reopened for light vehicles as clearing operations do continue. Here's more. A sudden cloud burst hit Chatru in Kishtwar area of Jammu and Kashmir late last night, unleashing a flash flood through the area. The force of the water swept away several vehicles and damaged property, with authorities now assessing the extent of the destruction. The sudden flooding also disrupted road connectivity, forcing authorities to shut the Chatru-Kishtwar National Highway. Debris was reported along the route as emergency teams moved in to clear the affected stretches. So far, there have not been any reports of fatalities in this horrific cloudburst. However, the administration continues to assess damage and restore normal movement in the affected area. This as the authorities are monitoring the situation closely amid continuing adverse weather conditions across parts of Jammu and Kashmir. Now, a day after thousands of migrants fled into Spain, US President Donald Trump pointed to Spain's unfolding migrant crisis in the North African enclave of Ceuta as a warning for the United States, claiming similar scenes could play out in America if the Democrat Party returns to power. Trump further described the situation as terrible, criticizing the political opponents. Here's more. A day after thousands of migrants in Spain fled into Ceuta, Trump has issued a big statement on the unfolding crisis. In the statement, he warned of Spain-like migrant surge in US. I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected, except worse. Much bigger, much easier to get into, despite the fact that we have built thousands of miles of wall, which I said we were going to do, but we didn't have that, forget it. But we have the safest border in the world. Right now, more details coming in, chilling details emerging of the Kulgam terror attack. Now, we have the inside details of what really transpired, how these cowards killed the Hindu migrants, viewers. Now, what we are getting to know is that the terrorists were dressed in black attire and they stayed with the family of the migrant worker for around 15 minutes. They had a normal conversation with the family, and once he asked one of the family members to provide him with water, and they went to fetch water, he shot at those two Hindu workers. He was carrying a black bag that concealed the AK-47 rifle, this cowardly terrorist of Lashkar-e-Taiba. He had asked the woman to fetch water for him, and when she went away, he took out the weapon from that black bag, the AK-47, and opened fire on the individuals, the Hindu migrants. And also what we know, as per the family, that they were also asked their religion and what community do they belong to. It's a target killing. It's a rerun of what happened in Pahalgam. These are the inside details being picked up by Republic TV viewers on this story, how the Pakistani cowards targeted the two migrants in Kashmir. When the woman went to fetch water for them, he shot at the two men.
This is what they've done. A similar situation was witnessed. A similar modus operandi was witnessed in Pahalgam, where the religion was asked, and the women and they shot men dead after asking religion. And now what we know is that there's some description also coming in of what they were wearing. And the AK-40. Okay, Zeenat joins us on the broadcast from Zeenat. Well, we now get to know that these terrorists were in black attire, and they had asked one of the women of the family to get water, and then they attacked the two men. Absolutely, Rakshita. This is another breaking that we are doing here on Republic, where it has been mentioned, because this is coming from within the sources or those who have been investigating the entire scene. See, I'll tell you, try to establish the crime. See how it all happened in Kulgam. This woman lives just near that Brooklyn, where they were working, they were earning their livelihood, and in the evening around 8:25 or so, someone in the black attire has come to their place. They have knocked them because this is a makeshift kind of accommodation, and then they asked, then the lady in the burqa type asked about their whereabouts and other thing. He got them into the conversation, and meanwhile he asked them to provide water to the concerned person, because this person was in black attire and he was carrying a black bag. And the moment the lady tried to fetch the water for him, he immediately opened his bag and fired upon this Bhupendra and Deepak. And because the injuries were so grave and from a very close range, that Deepak, that one of the individual lost his life. He got the grave injuries and he succumbed there. Even before reaching the hospital, he was declared broad dead later. But this tells you that the kind of the attire that the person has used, and he was in a complete black attire so that nobody could recognize him, and in the darkness of the night, so he tried to conceal his identity, and then carrying a black bag in which he was concealing this very weapon. And it is 100% now clear from the agencies, from the investigating agencies, that what we were breaking since morning, that this is the AK-47 weapon that was used. Yes, in the report also they have mentioned that it is the AK-47 weapon that was used to carry the terror crime in the Kulgam. So AK-47 that was concealed in a bag. The person, the individual, the terrorist who carried this terror crime was in black attire. He got them into the conversation, had the conversation for around 15 minutes, and then asked the family to provide him a glass of water. When the lady of the house tried to fetch water for him, he opened the fire. He opened his weapon took out that weapon from the black bag that he was carrying, and started and targeted these individuals, the migrant workers. This is again a breaking and also a very grim situation that we see, because if the terrorists started concealing themselves and carry the attacks in such a way, so that tells you the kind of modus operandi